Madam, good morning. Good morning. आ गए ये बेटा, सर आ गए हैं बस। अरे बेटा मेरा माइक जी मैम, मैम स्टार्ट करूं? मंजू, अजुल पूछो बड़ा से स्टार्ट करो। अजुल पूछो। Good morning, one and all present here. It gives me immense pleasure to extend to you all very warm greeting on behalf of Sadhu Vaswani Autonomous College, Bairagarh, Bhopal. I am Supriya Das. It is my pleasure and privilege to welcome you all in today's webinar. Webinar is a good and economic interface to connect people who are quite far apart. They can interact with each other and can share their views. Research is an important activity of any nation and society for generating the information to its development, and research methodology is the specific procedure or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. By realizing the importance of research methodology, Department of Chemistry and IQAC, Sadhu Vaswani Autonomous College, Bairagarh, Bhopal is organizing webinar on research methodology, importance and techniques. And today's guest speaker is Dr. Nitin Lakshitwar, Chief Scientist and Head, Energy and Resource Management Division, CSIR, NIRI. Professor, Academy of Scientific and Innovative Research, Nagpur. We are living in a country where we remember our God before starting any good work. As following our tradition, I would like to call Dr. A.K. Singh Sir, Principal Sadhu Vaswani Autonomous College, Shri Dayal Das Jitani Sir, Chairman, Sadhu Vaswani Education Society, for Malyarpan on Ma Saraswati's Pratima and lighting the lamp. Sir. हाँ, कोई कागज नहीं है जो तुम विद्यार्थी है, रोल नंबर हो। अरे वो कॉन्फ्रेंस है, रुक जाओ ना। इंटरनेशनल साइंस का कॉन्फ्रेंस है, उसी को हम देख। तो टीचर को पहचानती है? हाँ ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I request Honorable Shri Dayal Das Jitani, sir, Chairman, Sadhu Vaswani Education Society, to give welcome address.
का ये निवेदन स्वीकार करके आज इस वेबिनार में उपस्थित हुए और वक्तव्य देने के लिए तैयार हुए हैं। सर, आज के इस वेबिनार में आपके द्वारा जो सब्जेक्ट चुना गया है, वास्तव में वह बहुत ही आज के समय अनुसार अनुकूल है। आज रिसर्चर जो बेचारे रिसर्च करते हैं, कई तरह की परेशानियों से मुब्तला होते रहते हैं। आज का ये वेबिनार मैं उम्मीद करता हूं उन सभी रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च करने वालों के लिए लाभदायी होगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज की आयोजित करने वाली टीम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और अन्य लोगों को जिन्होंने ये शॉर्ट नोटिस पे वेबिनार आयोजित किया है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. Now I request Honorable Shri Rajendra Vanwani, sir, to give welcome address. It is my privilege to invite Honorable Shri Rajendra Vanwani, sir, General Secretary, Sadhu Vaswani Education Society, to address the audience. Vanwani, sir. Vanwani, sir. क्या हुआ अंजल? Vanwani, sir, नहीं कनेक्ट। Due to some technical issue, Vanwani sir cannot connect with us. So, proceeding in this program, so I would like to call upon Dr. A.K. Singh sir, Principal Sadhu Vaswani, Autonomous College, Bairagarh, Bhopal, for giving brief introduction about the college. Singh sir. साधु वासवानी स्वशासी महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा रिसर्च मेथोलॉजी, इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक विषय पर आयोजित नेशनल वेबिनार में शामिल आदरणीय श्री दयाल दास डेटानी जी, अध्यक्ष साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी, आदरणीय श्री राजेंद्र मनवानी जी, महासचिव साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी, आदरणीय डॉक्टर नितिन लपसेतवर, प्रोफेसर, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, नागपुर, आदरणीय डॉक्टर सुमन मलिक, कार्यक्रम समन्वयक एवं डायरेक्टर साधु वासवानी महाविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर अर्चना सिंह, कार्यक्रम संयोजक, सभी सदस्य, प्रतिभागी, आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से
हृदय से स्वागत करता हूं। साधु वासवानी महाविद्यालय की स्थापना 1979 में संत हृदयराम साहब जी की प्रेरणा से हुई। यह महाविद्यालय नेक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है। सन 2016 में हमें स्वशासी दर्जा प्राप्त हुआ। महाविद्यालय में पारंपरिक विषयों के साथ साथ बीबीए, बीसीए, बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग, टैली अकाउंटिंग जैसे रोजगारमुखी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। महाविद्यालय में सुपर 30 योजना के अंतर्गत चुने गए 30 विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। महाविद्यालय में रिसर्च का वातावरण इससे पता चलता है कि महाविद्यालय को डीएसटी फिस्ट द्वारा 2 बार प्रोजेक्ट प्राप्त हो चुके हैं। कई विषयों में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का यह शोध केंद्र है। आज के वेबिनार का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रिसर्च का मूल उद्देश्य किसी विषय अथवा समस्या पर योजनाबद्ध ढंग से सृजनात्मक कार्य कर ज्ञान संपदा में वृद्धि करना है। रिसर्च में किसी भी विषय अथवा समस्या का गहनता से अध्ययन किया जाता है। लंबी प्रक्रिया होने के कारण शोधार्थियों को बहुत धैर्यपूर्वक कार्य करना पड़ता है। आज वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के समय में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का महत्व बढ़ा है। एक अच्छी रिसर्च मानव जाति के विकास में बहुत महत्व रखती है। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर नितिन लपसेतवर आपको रिसर्च मेथोलॉजी के महत्व एवं तकनीक पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। मैं रसायन शास्त्र विभाग और महाविद्यालय की टेक्निकल टीम को इस आयोजन की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Thank you, sir. I am pleased to invite Dr. Suman Malik ma'am, Academic Director, Sadhu Vaswani Autonomous College, Bairagad, Bhopal, and coordinator of the webinar to give general introduction about the webinar. Malik ma'am. Respected Shri Detani ji, Shri Manwani ji, other members of Sadhu Vaswani Educational Society, Principal Dr. A.K. Singh, Director Dr. D.K. Dubey, Honorable Speaker Dr. Nitin Labshetwar, the faculty members of my college and other faculty members who have joined from outside, research scholars and dear students, I welcome you all in today's lecture on research methodology, importance and techniques. When the task of organizing this webinar was given to our department, no other name than Dr. Nitin came to my mind, as I had an opportunity to visit his labs and seen the quality and depth of research being done by him and his team members. I am really thankful to Dr. Nitin for sparing his valuable time for this lecture. As far as the topic of the lecture is concerned,
It seems to be a simple one, but in real sense, I have seen many young faculty members and research scholars seeking answers about their publications, citation index, H index, impact factor, Scopus listing, SCI indexing, and many other doubts. They are also very keen to know how an effective research project is prepared and presented. I hope with this lecture, all these doubts will be cleared after listening to Dr. Nitin. So without taking much time, I once again welcome you all in this lecture. Thank you. Thank you, ma'am, for throwing light on the importance of the topic. Now, I request Dr. Bharti Nema, Joint Organizing Secretary, to give brief introduction of Honorable Resource Person, Dr. Nitin Lapshetwar, sir. Bharti, ma'am. Bharti, ma'am, we are unable to hear Dr. you. Nitin Lapshetwar. Sorry. Thank you, madam. Good morning to all of you. Today's resource person is Dr. Nitin Lapshetwar, Chief Scientist and Head, Energy and Resource Management, Division NIRI CSIR, Professor, Academy of Scientific and Innovative Research, Nagpur. Dr. Nitin is a PhD in chemistry with 35 years of research experience in environmental and energy-related research. He has worked as STA Fellow, JSPS Fellow, and visiting overseas research at NIMS Shukuba, Japan, and as a visiting professor at Yuzu University, Japan, under the Global CUE program. He has also worked as other international laboratories on development of material and process, including low cost and nanomaterials, nanocatalyst, for their application in automobile emission control, GHG emission control, diesel soot oxidation, cleaner energy generation, etc. He has over 170 research publications with over 6,800 citation and H index of 44 and I-10 index of 104 and 22 international patents, in addition to a few contributions in books. He has also worked on retrofitment as well as other projects for emission control from in-use and other vehicles. He is an identified expert for Central Pollution Control Board of India in the area of air pollution control and a jury member for Technology Challenge for identifying and promoting solution for mitigating air pollution. Thank you, madam. Thank you, Bharti, madam. It is a great pleasure to welcome such a noted personality as a guest speaker. Today, we are privileged to have an opportunity to listen to him. On behalf of all my audience, I welcome you, sir. I am welcoming you, sir. Yes, ma'am. Thank you very much. Good morning. So, can I go ahead? Yes, please. Okay. Very good morning to all and the honorable dignitaries from the college, Professor Suman Malik, and all the participants. So, it's indeed my pleasure to be here and share some of our experience with you.
So I think what I'll do at the outset, first let me share my screen, and Madam, please confirm. So can you see my slide, ma'am? Yes, sir. Yes, Fine. sir. Okay. We are able to see. So thank you very much for the kind words, and it's always great to interact with the teachers and the research scholars. And at the outset, let me mention very clearly that I'm going to share you many slides, many things, quite a few things I have taken from literature, from internet. Possibly I have given the sources from where I have taken it. There'll be few basic slides also, and that I have included. Consider the fact that there will be possibly some research scholars who need to do that. Otherwise, those teachers who are having a lot of experience in the research, please ignore those slides. Okay, those are not actually meant for you, and I apologize upfront that please don't feel offended. I possibly respect maximum to the teachers because they are the people who understand the subject maximum. Although we are in research, I'm in research for more than 30 years, but I often consult teachers, not only my teacher, any teacher for that matter. So you are the best source of knowledge. You are the best, I would say, those fellows who understood the subject very well. So with this, what we'll do, first is as you need to deal with the students. Okay, you are the most important, probably the pillars of this society and the country. That it is not only you need to shape your career, you need to advance your prospects, your research, your promotions, which everybody does. I also do. But you have a big responsibility to groom the students, and which is quite a burden, I would say, and quite a challenge, and at the same time, pleasant responsibility. So this is how I planned. There will be plenty of slides. A few slides will skip fast. Again, I will repeat that this is the whole thing was designed for those early career researchers, those who do not have much of experience, and many things you will also find useful possibly. And also I have included quite a few things based on our experience and the challenges and the problems we face at our institute or through my international experience, I would say. So there are two things. One is definition of whatever we are trying to understand. Okay, so we should look at the definition, but at the same time, it is important to understand the thing in the easy possible way or the easiest possible way. So sometimes, okay, just go through these definitions because you are a teacher, you need to also tell these definitions to everybody. But I would prefer, let's try to understand the grasp the things. Okay, so there are plenty of definition of research we all understand. Initially, the research was restricted to the only scientists and the universities to get the PhD. But now we understand that, okay, there's a market research, there's a financial research, there's research in everyday's life, there's social research. Okay, so it's a very generic term. So there are also synonymous terms, exploration, investigations, search or study or inquiry. Okay. So these are by, by definition, these are the things. Now, what is the primary purpose of research? Plenty, okay? They include, first of all, documentation. It's not only you should be a PhD scholar or you should be a scientist or you should be a professor. Anything you observe, okay, anything you observe, you can document because that will be useful for you. Okay, and I'm going to give you plenty of examples. We see many such evidences in the daily newspaper, on the WhatsApp, that I have observed like this. Okay, there is a mobile which can get like small blast and which can injure you. So please don't use mobile while it is charging. That's an observation which somebody is trying to share with all of us, which is very useful. Okay, so all these things require documentation or sharing with us. Then there is a difference in the discovery or innovation. And then for scientific or any other research, interpretation is something which is very important, because that is the thing where sometimes intentionally, but quite often unintentionally,
we do mistake. And then there is a problem that no, this interpretation was not good, and you have plagiarized it, or you have put the wrong thing, okay? And there are problems related to this. So which is very, very important for us. And then how to do that? So we need to systematically do everything. Whatever we want to do, there should be some SOP, standard operating procedures, to do that thing, so that we are likely to make less mistakes, okay? Now, what is the role of research and researcher? Let me put it that recently हम लोगों ने सब लोगों ने कोविड का प्रॉब्लम फेस किया हुआ है, और हम लोग को यदि कुछ कंफ्यूजन है रिसर्च के बारे में, तो हर बार हम कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं अपने सामने, बिकॉज कोविड ने हमको बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया हुआ है कि हाउ टू डू द रिसर्च, नंबर 1, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रिसर्च, नंबर 2. अदरवाइज वो बोलते थे कि अरे वो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी लैब में बैठ के कुछ करते रहते हैं सालों साल. अभी नाउ वी रियलाइज दैट anybody has done anything on the viruses even 10 years, 20 years, 30 years, or 100 years before, it becomes useful for us. Okay, so that's the importance of research. Then second thing, addressing the void in our knowledge. Again, there is a problem. People used to say कि अभी बचा क्या है research करने को, everything is there. And suddenly this virus came and we found ourselves, oh my God, we do not know possibly anything about this particular virus, or we do not have vaccines, despite the fact the medical science has advanced like anything. And the whole world struggled for that. Okay, so there are many challenges. There are many challenges. The climate change is another challenge. So addressing the void in our knowledge and unresolved problem by asking relevant question and seeking answer to them. जो भी unanswered questions हैं और जो future में आने वाले हैं, उसके लिए हमको उनकी solution ढूंढने के लिए research कर रहे हैं. तो provide a method of obtaining those answers by inquiring. Now, you must have heard about the word jugaad, okay, or there are some desi remedies, okay. In case of emergency, yes, we need to use them. But research offers and should be done in such a systematic way that we should not land up accepting something which may not be useful, which may be harmful, number 1, okay. हमने कुछ खा लिया और उसके बाद में हमको प्रॉब्लम हो गया. I think there were no less than 1,000 medicines and options given to prevent COVID or take care of the COVID. But today, after 1 year, 1.5 years, and 2 years, we know what worked and what did not work. So we should not fall prey to such kind of remedies or such kind of things which are not scientific, number 1. But at the same time, what is also equally important, that somebody comes up with some idea that this particular food or this particular method or this particular steaming method is helpful, okay, so let us do it scientifically. So for that we should have a background of research. Okay, इन्होंने कुछ ये बनाया, ये food बोला है, ये जड़ी बूटी बोली हुई है, इससे 4 लोगों को फायदा हो गया. अभी जड़ी बूटी हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, ठीक है. जो फार्मास्यूटिकल्स का रिसर्च है उसका पूरा एक्सट्रैक्ट पैटर्न है, हम इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूजफुल फॉर कोविड और नॉट, नंबर 1. नंबर 2, whether this thing is going to harm us after 1 month, after 1 year, and most importantly after 20 years. Okay, so that's the importance of research, and for that we need to collect a huge amount of data, huge amount of things we need to do. Sometimes it appears that this is not useful, or even we may say this is useless. It is only to increase the number of papers, but no, quite often it is not. Suddenly you will land up in a problem and you would refer thousands of references, okay? Then researchers contribute to understanding of the phenomena and communicate that understanding. So this is known as a fundamental research. We'll look into that, okay? And of course, we need to improve the skilled activity. Now, quite often you need to deal, and of course, I also need to deal with the students who come to us. So it is our moral, ethical, and I would say national responsibility to train them to become a good researcher, okay? Even better than us. So basically research is a search of new knowledge, and it is thus distinct from the routine application of known result, okay? The re in research is actually misnomer, okay? When you perform research, your goal is to add to human knowledge. So you have done something which is 90%, somebody's adding 91%. In that confusion, it is known as the research actually, but you are adding to the new knowledge. You must always understand. And please tell your student that
research during the PhD is a training. Is a training to make you professional researcher and to train you how to do research. So these kind of things like research methodology and all becomes quite important. And I would say even if you're not doing research, somebody is a master student. Fortunately, things are changing in India now. Now the master student or even sometimes the BTech students, they are encouraged to publish the research paper. Okay, especially somebody is doing BTech, he wants to do MS in say US or abroad. So he will try to publish. There are many interns we receive from good colleges and they say, sir, can I publish research? I ask, why do you want to do that? So they say, mujhe MS karna hai, isliye zaruri hai. So then we need to tell them, look, man, research is not for that. So first you need to understand, then we teach them a research methodology. And if you can come up with the research, brilliant, no problem, okay? So the purpose of research, why to do research? To contribute or to add to the existing knowledge. How to do research? By building on the works of others, okay? Sometimes, rarely, it's for the first time you do that, okay? Otherwise, we are actually building on the work of others. So just imagine, I want to do research in a particular chemistry field. I want to do some, say, natural product research or some material research. And I found that this is very important. Now, please understand that I will be dependent on the literature survey. And please try to imagine the literature I'm referring to. Okay, if it is not done in a proper way and somebody has done something unintentionally and reported something wrong result, then how much it can impact you. So it's extremely important to work on that. Okay. So research is basically to improve the quality of life, to take care of the environmental problem, to take care of our health problem, food related problem. Okay. So it is always need based. Okay. It's either need based or it is scientific curiosity based. There are many, including, I would say almost everybody has got some curiosity. If you're a chemist, you will have some curiosity. I was trying for this experiment. And then you'll suddenly try to turn down the books. You have no answer. Then you'll try to search the literature. Still you are confused. Then you will try to contact your teacher. And if teacher also feels though this is something interesting, we should explore why it is happening. So that's basically curiosity-based research, which is generally termed as the basic research. But please try to understand those kind of a research generally leads to a lot of discovery. Okay. And the second is applied research, which is invention-based. Okay. Which is invention-based, which is need-based. Today we need a COVID vaccine. That is your applied research. But these are practically and hugely interrelated. Okay, you cannot do the applied research without the basic research. It's as simple as that. Okay, so applied research leads to the application. It turns into technology and goes to the end user. I think during last 20 years or so, or 25 years, we give a lot of importance to applied research. आपने technology बना दी, आपने device बना दिया, you are so great. While आपने कुछ scientific problem को यदि solve किया है, so other than researcher, nobody knows. Okay, your photograph will not be there in the media or in the newspaper. Okay, आपका device नहीं दिखेगा, मुझे technology नहीं दिखेगी आपकी. But try to understand, if you want to be a professional researcher, okay, you should probably try for more recognition in scientific world, okay, than the social media or than the social world. So both the things are very important. Fortunately, thanks to climate change, thanks to COVID, everybody got to know that basic research or the fundamental research is also equally important. Now, unless you understand what is the climate change, what is the impact of CO2, how to control the CO2, okay, that's pretty basic research. You can't go for the applied research. So both are important. So it depends on your understanding, but please don't hesitate to go for the basic research or the fundamental research. Okay. I often feel that if why is clear, how is easier? What does it mean, especially for the student? Students generally, what happens if he's good in mathematics, so doing research in mathematics becomes fine. If he is good at chemistry, okay, and we force him to go for say, theoretical chemistry or some thermodynamic problems or
quantum chemistry related problem, okay, he may, get bored in 6 months. But if you try to tell him and explain him ki what you are trying to do will be applicable for this particular application, for this particular industrial application, okay, then you will feel ki, okay, that's number one, it's very, very good. The second issue is, if you understand ki what is the final use of your research, okay, then you always get boosted, okay, even in the fundamental research. And in the applied research, it is almost mandatory. It is absolutely mandatory that you should know what is the final application. Why? For example, you recently developed an incinerator to destroy sanitary pads. The sanitary pads का बड़ा उसका disposal का बड़ा problem चल रहा है. Government ने पिछले 10 साल में काफी promote किया हुआ है कि everybody, all the females should use the sanitary pad because otherwise it is not hygienic. Now, how to dispose of is a problem. Somebody throws in the toilet, somebody throws in open place where the bacteria thrives, और उससे काफी hygiene का problem होता है. हमने एक इंसिनरेटर बनाया हुआ था क्योंकि उसकी नीड थी. जो इंसिनरेटर्स मार्केट में थे उसमें कुछ इश्यूज थे. Now, working for that incinerator, I should always use ki what is the final application. Okay. For example, हमको मालूम था कि 750 या 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है उसमें. Now, immediately it should come to your mind कि that's pretty high temperature. वो ऐसा टेम्परेचर है कि जो हम लैब में या कुछ इंडस्ट्री में यूज करते हैं और हमने कहीं जनरल पब्लिक में रख दिया उस इंसिनरेटर को, तो सेफ्टी का इश्यू आ जाएगा. हाउ टू हैंडल इट. ओके, सो दीज आर द फाइनल एप्लीकेशन रिलेटेड थिंग. अदरवाइज आई विल डिजाइन अ ब्यूटीफुल डिवाइस, ओके, और पता पड़ा किसी ने उसको यूज करने की कोशिश की और उसका हाथ बर्न हो गया. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फाइनल एप्लीकेशन. सेकेंड थिंग, आई नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सपोज आपके कॉलेज में मैंने एक इंसिनरेटर इंस्टॉल कर दिया. ओके, and that incinerator work on a pretty high voltage, okay, and it has got a specific electric requirement. Okay, it also requires some kind of an exhaust release, and I never thought about it. So what will happen? आपका इंसिनरेटर आ जाएगा, उसको या तो आप कहीं इंस्टॉल कर दोगे और पूरे इसमें आपका emissions आ जाएंगे, या फिर आप उसको डंप कर दो कि नो, इसके लिए तो बहुत बड़ी चिमनी चाहिए. So final application is very important to understand in applied research. Okay, so what is the new question is question identify करना सबसे पहले, then उसके hypothesis देखना, then उसका research plan करना, then we do a lot of experiments and we collect the data and the result. So all of us know this. This is a very logical process we all follow for any research. Okay, that's called the closed loop conceptualization of the research process. एक mistake हम लोग करते हैं generally कि हमारे पे थोड़ा सा open loop हो जाता है. यहाँ पे क्लोज लूप इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि unless you are satisfied, it should be the closed loop. Otherwise, what will happen? It will be a straight line. कि आपने किसी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दे दिया, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया, फिर एक हाइपोथेसिस दे दी, उसको रिसर्च प्लान बना के दे दिया, उसने डेटा कलेक्ट किया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद में वो दैट्स द एंड ऑफ इट. Whatever the result comes, okay, will form some research paper, will form some thesis. हम उसको क्लोज नहीं करते हैं, हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं क्रिटिकली कि हमने वो प्रॉब्लम दिया है कि. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर सम रिसर्च, ओके, फॉर एग्जांपल 3 years डिग्री प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, और 4 years पीएचडी प्रोग्राम. So first year is like literature search, this and that. Second year we'll do the experimentation. Third year we'll do the interpretation of data. We'll start publishing the paper. And final year we'll write the thesis. And then 3.5 years we should finish the thesis. And 6 months we'll keep it for the viva and evaluation. Okay. The problem is we should keep a lot of time, significant amount of time, that if I do not get proper result, if I'm not able to interpret it, I should have some cushion. Okay, I should have some cushion to first thing, probably again perform the experiment. Number 3, if we are confident कि मैंने research experiment बहुत properly perform किए थे और मुझे जो data मिला है, I'm 100% confident about that data, but जो results आए हैं वो expected नहीं है, then again you will need at least 6 months time you should keep for yourself. Okay, why? You can again go back to the literature, go back to the science book and try to interpret the data, and trust me, जो आपने expected किया था वो यदि नहीं आ रहा है और आप उसको interpret करते हैं, so that is a much better research.
which will fetch you good publication, which will fetch you a good name. So it should be a closed loop, and you should not hurry up, or rather you should plan in such a way. Now things have changed. You got a facility. You can really squeeze your experiment to 1 year or 2 years. So keep 6 months for that. Okay. So this is two types of research, basic research and applied research. According to me, both are extremely important and equally important. Okay. So there are many things related to SARS-CoV-2 virus actually published. I think nowadays, maybe by now, maybe 1 million research papers. Because everybody was interested to publish. It was very important practically, but at the same time, researchers are also professionals. So they find it's a good opportunity. आज हम कोविड के लिए कुछ भी कहीं करते हैं तो तुरंत पब्लिश हो जाएगा. There are specific volumes about it. उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता because everybody like it's a profession today. So basic research means, for example, we published last year, which was not related to us. But we thought कि कोविड में हम लोग क्या काम करेंगे, okay? But within 6 months it clear हो गया था कि कोविड में कोई भी काम कर सकता है, okay? Because the virus is omnipresent, okay? So not only biologist or the virologist, practically सबके लिए कुछ ना कुछ वहाँ करने के लिए था. दो aspect में. One is to understand the virus and its problem. Second thing, उसको कैसे control करना, health related and medicine related thing. And third thing, it was very important to work on the sanitization or UV based disinfection or to understand. And for doing that, हम लोग ऐसे discussion कर रहे थे कोविड वायरस के ऊपर. कुछ रिसर्च पेपर्स देखे हम लोगों ने, तो सबका था कि आपके घर में वो स्प्रे कीजिए, इसका यूवी डिसइंफेक्शन कीजिए, साबुन से हाथ धोइए, ये कीजिए, वो कीजिए. एंड देन सडनली वी रियलाइज कि जब वो वायरस है, मान लीजिए वो वायरस किसी पार्टिकल पे, पार्टिकल सब जगह है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वो वायरस एक डीजल सूट पार्टिकल के ऊपर ऐसा एब्जॉर्ब होता है. तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि डीजल सूट पार्टिकल बड़ा पॉइजनस होता है, टॉक्सिसिटी होती है. तो जब ह्यूमन टॉक्सिसिटी है तो उसकी वायरस के ऊपर भी टॉक्सिसिटी होगी. तो अब वो वायरस से यदि ग्लास पे, मेटल पे, डीजल सूट पे, डस्ट पार्टिकल पे यदि सेटल होता है तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे? वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा, ओके, या फिर कुछ नहीं होगा उसको, या फिर और एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज वन थिंग बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट नीरी की पार्टिकल पोल्यूशन क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है. तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. तो हम लोगों ने तुरंत उसके ऊपर काम किया, थ्योरेटिकल काम किया, लिटरेचर बेस्ड काम किया, एंड वी जस्ट पब्लिश्ड इट. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई इनिशिएटेड, आई हैड प्योरली very clear sort of aim in my mind that we need to work on this because this is a virus which people are not able to understand, everybody. And there's nothing like that I'll get a publication and I'll get recognition that मैंने जो उस पे काम किया हुआ है. It was a need based, okay? So anybody can work on this problem. So please try to understand. It's nothing like that कि आज उनको health burden हो गया है तो केवल biologist, pharmacist and doctors वही लोग काम कर सकते हैं. हमारी जो CSIR की लैब थी सीरी, उन्होंने डिसइंफेक्शन का वो बनाया हुआ है. नीरी जो थी, नीरी ने वेस्ट डिस्पोजल के वो बनाए हुए. हम लोग खुद एक ओवन डिजाइन कर रहे हैं. Okay, because try to understand that there are multiple things required when we face such problem. Okay, now let's understand research and development, how to do research. You can possibly encourage the young student, bright student to take up their career as scientist or as professor. I would prefer a professor. Why? Because you contribute to the academics, you contribute to the education, okay? And at the same time, you can also do research, okay? And of course, scientists can dedicate it to research and we can also generate this thing, okay? So we need to really try to tell them or tell their parents. There are many programs of CSIR in which we encourage. There are many programs at Aisha also, okay? This is some statistics wherein we need to also worry. It's slightly old, I would say. Global Innovation Index में हम लोग 2015 में हमारा rank था 81, which was like pretty poor, I would say. China was 29, of course Switzerland was 1. I mean, there are top 10 countries which keep on fluctuating, but India was 81, which was even below 70. Now we call ourselves great brain, okay? We are great brain, no doubt whatsoever about it, okay? So there are two things required. One is the infrastructure, facilities. Second is a training. And third thing is encouragement
to the youngsters to take up the research. And let's be honest that if you don't have any job opportunities in research, why will people come? Okay, so it's not like that. There are opportunities. Okay, there are not too many opportunities like IT, but there are opportunities. The only challenge is if you're doing good research, if you're really honest, okay, and of course you need a basic brilliance for sure if you want to come to any of these kind of a discipline. But the good thing is, now in the 2021 we ranked 46, so 81 se hum log seedha 46 pe aa gaye. Okay, so it's not something we always start criticizing, it's something positive. Despite the fact we are developing, okay, we need to take care of the poor people, we need to take care of their hunger, we need to take care of their health issue, we need to take care of their education. Those are the primary problems, those are the very big problems. Okay, despite handling them, we could do pretty much good in the research, and that is all because of people like you and scientists. Okay, now on the right side you can see the total patent granted during 2006 to 15 in India were 67,000. But what is very important and what is extremely worrisome, that during that regime, the patent granted to foreign inventors were 56,000. So 66,000 में से 56,000 patent जो है वो foreign company ने file किए थे India में. You understand the patent? या आज मैंने इंडिया में कोई पेटेंट फाइल कर दिया है, तो यदि मैंने पेटेंट फाइल किया तो मैं इंडिया में उसको कमर्शलाइज कर सकता हूँ, और इंडिया में पेटेंट फाइल नहीं किया तो मैं उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकता हूँ, उसको यूज भी नहीं कर सकता हूँ. तो एक तरफ हम लोगों ने यदि मान लो ये डेटा देखा है कि अरे इंडिया में तो 67,000 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फैंटास्टिक. बट द मोमेंट वी सी कि 80% तो पेटेंट जो फॉरेन कंपनी ने फाइल किए हुए थे, तो उससे हमको कौन सा बेनिफिट्स है? मतलब बेनिफिट है लेकिन पूरा मॉनेटरी बेनिफिट उनको जाएगा, पूरी क्रेडिट उनको जाएगी. सो इंडियन इन्वेंटर्स ने वो लगभग 10 साल में केवल 10,000 पेटेंट फाइल किए हुए थे, which was a big worry. Okay, but now things are improving. Fortunately, if you see CSIR, I think still files maximum number of patent. Okay, so filing patent is really good. Filing useful patent is even better. Okay, it doesn't cost much. So this is a big message for us that during the research methodology or during the research training, we need to understand that if we are doing something and the aim is to publish a paper, the aim is to get a PhD, the aim is to complete a project for which you got funding from say UGC or AICTE or DST or DBT, okay, and you have never committed कि मैं पेटेंट फाइल करूंगा या पेटेंट मिल सकता है करके, still keep a watch. That's first very important lesson we all should learn. Fortunately, we are working in a research institute like CSIR, wherein the major objective is to file a patent, and then we look into the publication. But otherwise, in the academic institutions, generally, the aim is to file, publish a paper, aim is to complete the PhD, aim is to get new projects, for obvious reason. And we often miss. So it is very, very, very important to understand what is patent, how to file a patent, okay? And trust me, it's very easy. It's very easy, and still you are not comfortable. Then there are hundreds of agencies nowadays in India. If you approach them, you pay some decent amount, not much. If you are having a project, there's absolutely no problem, and they will do practically everything for you. The only care you need to take, although they are very reputed and they themselves will sign an agreement with you that before filing a patent, because आपको अपना पूरा data उनके साथ share करना पड़ेगा. Okay, so sign some kind of an agreement and they will do the job for you. So please look into this aspect. And filing Indian patent is not so expensive. Filing foreign patent is very expensive, for which there are some schemes you can apply for. So this is my first important message, that whatever you are doing in science stream, okay, please look for patent. Then if I'm not working on say chemistry or biology, and if I'm working on a small device, okay, I'll again give you some example. We work on the cook stove, चूल्हा. क्यों? क्योंकि चूल्हे के pollution से इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ होती है. If you understand air pollution, and there will be a common question कि सबसे ज्यादा air pollution किस चीज से होता है? हम लोग बोले गाड़ियों से होता है, इंडस्ट्री से होता है. 6-7 साल पहले तक नहीं. चूल्हे के धुएं से सबसे ज्यादा हेल्थ बर्डन होता था इस कंट्री में as far as air pollution is concerned. Thanks to now LPG penetration, Ujjwala Yojana and many other things,
कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट है. So our team has designed a cook stove. Now cook stove का क्या पेटेंट फाइल करेंगे हम? उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता है. Okay, so there are registrations of the software, there are registrations of the design. Okay, there are trademarks and there are patents. So I would suggest the organizers that एक dedicated lecture किसी professional से आप इसी पे कराइएगा, patent, design and trademark. And I can tell you, your college and those who are attending from different colleges, they will get benefited, and more importantly, because of their awareness, the country will get benefited. आज जो हमारी पैथेटिक कंडीशन है कि हमारी कंट्री में हमसे ज्यादा बाहर के लोग फाइल कर रहे हैं, वो हम लोग फाइल करेंगे और हम लोग दूसरी जगह पे फाइल करेंगे. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, आई थिंक माय ऑल टाइटल्स आर गोइंग. Okay, now this is like a scientific research we do. Select a topic, detailed literature survey. Now we we are generally in hurry. और मैंने जब रिसर्च की थी, मुझे ध्यान था कि हमको 6 महीने का टाइम दिया जाता था कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट को टच नहीं करेंगे. 6 मंथ्स तक आप लिटरेचर सर्च करते रहेंगे. उसे 2 कारण थे. उस समय ये टूल्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हम लोग को, मेनी ऑफ यू नो दैट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो था उसकी 1 साल का जो एब्स्ट्रैक्ट था इतना बड़ा रहता था, उसके फिर मल्टीपल वॉल्यूम्स रहते थे. मैं नागपुर आता था, नागपुर में LIT में लिटरेचर सर्च करता था, और करीब जो हीप रहता था वो करीब 15 फीट का हीप रहता था. ओके, उसको 2 पार्ट में वो स्टैक करते थे, वो 1 साल के लिए रहता था. एंड देन यू नीड टू सर्च ऑन दिस. सो फर्स्ट सिलेक्ट अ टॉपिक, बट वो टॉपिक जो आपका प्रोविजनल होना चाहिए. और एक बहुत अच्छा बात मैंने देखी है कि ACSIR, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है CSIR का, उसमें इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है. यू जस्ट फ्लोट अ टॉपिक, ओके, यू वर्क ऑन इट, and during the course of 2 years, and forget 2 years, even 3 years, you can modify that topic. I have seen some cases you can completely change that topic. Okay, so please keep in mind that हम लोग एक टॉपिक जब सेलेक्ट करते हैं और उस पर लिटरेचर सर्च करते हैं, और सपोज इतना फास्ट R&D हो रहा है, उसमें पता पड़ा कि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जो हमने सोचा था वो तो 2 साल पहले रिपोर्ट हो चुका है या होने वाला है रिपोर्ट. So there should be a flexibility in your topic, and I normally recommend to most of the universities that you should give flexibility to modify the synopsis, to change the synopsis, to modify the title, instead of कि वो कुछ भी हो गया फिर उसको हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत जोड़ तोड़ लगाएंगे और कैसे भी करके सबमिट कर देंगे चीजें. It should not happen. So first we should select a topic, detailed literature search, okay, identify, understand the problem, and then go for the work plan. And I spent a lot of time in Japan. मेरा postdoc था, और उसके बाद में almost for 15 years I used to go every year. So there I found Japanese are quite famous that they spend sometimes 50% time on planning than execution, and just planning and discussion. So it's extremely important. Okay, please, it's very important that otherwise we just pick up कि अरे यार 6 महीना हो गया, अभी 1 साल हो गया, अभी तो हमको कुछ करना पड़ेगा. Time short हो रहा हमारा पूरा. Okay, and you'll end up in a problem. So they give so much of importance to work plan. वो बोलते हैं ना कि जैसे कोई VIP आता था मिनट टू मिनट प्लान बनाते हैं, ऐसा वो एक एक चीज, माइक्रो वर्क प्लान, even I would say nano work plan, they make it. And on every aspect of work plan they work separately. Like if you are from chemistry people, then I'll give you some example. I have identified I need to develop a catalyst. Then I did literature search. So 10 catalysts जो मैंने identify किए थे उसमें से 6 मैंने reject कर लिए theoretical basis. Now I am with 4 catalysts. Now with this 4 catalysts I have started working on the synthesis plan. Now synthesis plan. Anybody? Okay. So please keep your mic mute. So on the plan, I write chemical. I need ferrous sulfate, and we forget after that. They will read about the ferrous sulfate. How many times? I mean, how many kind of quality of ferrous sulfates are available? What are the characteristics? Purity क्या है? यदि purity ये ठीक नहीं है तो क्या होगा? What are the purity we should worry about? What is the primary standard about the ferrous sulfate? And then they will move forward. So you will find few researchers, students especially, they will have enough time. There will be few students who will never have time and they're always busy.
Sometimes I can tell you the difference is कि जो busy है student वो हर चीज को बहुत thoroughly पढ़ना चाहता है. क्यों? क्योंकि उसको आपको encourage करना है कि today if you want to use the ferrous sulfate, you should read at least few things about the ferrous sulfate so that throughout your life you will remember. If ferrous sulfate comes, this could be a problem. Moisture content can be a problem. Purity can be a problem. It can oxidize into ferric, can be a problem. This is how we need to train them, okay? And then we can go for the planning of experiment where we can use the design of experiment, what is known as a DOE, okay? And collection of data. So this is gist of it. We know, but it is always good to keep a chart or slide in front of you to tell your student how much time and how seriously we should do all these things. Okay, it looks easy. Everybody rush for it. Students को obviously rush होगा कि मेरे को 5 सर ने बोले कैटलिस्ट बनाने हैं, 5 कंपाउंड बनाने हैं. Let's plan. 3 महीने का मैं 1 महीने में कर देता हूँ करके फटाफट हो जाएगा. And I am relieved. Then I have enough time. So approaching a research problem. So formulation of research question in which the guide need to help a lot. Okay. Identifying a gap. आजकल आप कोई proposal लिखते हैं तो एक gap analysis करके ही देना पड़ेगा आपको और उसके बाद में SWOT analysis करके देना पड़ेगा. So identifying gap is very, very important. Formulation of set of hypothesis. We all know. Okay. Preparation of a literature review pertinent to the hypothesis. We all know. The only thing is we should do it systematically. Choice of methodology that is appropriate to an examination of hypothesis. Choice of techniques and description justification. These are all things we all understand. The only thing is when it comes to the student, we need to tell them and we need to write on a piece of paper that they need to follow this. Okay. This is another way of defining it. So I think it will be a repetition. So I'm not going to explain. Now, gap identification. मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया हुआ था कि एक हमने पेपर पब्लिश किया हुआ था कि SARS-CoV-2 was more stable on plastic and stainless steel than on copper and cardboard, and viable virus was detected up to 72 hours after application to these surfaces. Now, why this is important? Well, it is important because कहीं से कुछ खबर आ रही थी कि यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन कम हुआ है और यहाँ पे ज्यादा हुआ है. यहाँ पे वेंटिलेशन था इसलिए कम हुआ है, वहां पे वेंटिलेशन नहीं था. इस घर में या इस हॉस्पिटल में या इस ऑफिस में मेटल की चीजें ज्यादा थी तो वहां पे वायरस का सर्वाइवल कम था. ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतनी थी, ओके, दूसरी जगह कम थी. अदरवाइज सब लोग हर जगह से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ला रहे थे कि माय गॉड इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है. नहीं, आप गलत बोल रहे हो. आपने बोला कि 3 दिन बाद इन्फेक्शन हुआ, हमारे यहाँ तो एक दिन बाद ही वायरस नहीं मिला. So it is important to know everything about the virus. Okay, so that was a gap which we identified. Okay, the factors which influence the research outcome. One is a research problem. Okay, दूसरा good documentation जिसमें हम लोग generally lacking है. Okay, I'm saying across the country there are only, I would say 20-30% of the people who are very good at institutions. Generally in private sector, the documentation is very pakka, very good, very professionally done. Okay, but in the research institutions and like the universities and the colleges, the documentation is often not good. Time management, match with your interest, contribution to knowledge, it's all fine. Always remember, if you are finding something difficult, don't ignore it, because that might affect the quality of research, quality of data very, very badly. Instead, go for collaboration. Don't hesitate to give some credit. Today, for example, data scientists. Okay, there are people who are very professional in analyzing the data, interpreting the data. They will do sort of modeling. So they will contribute to your paper. आपने data generate किया वो सबसे ज़्यादा important for sure. You need to perform the experiment. But how to interpret the data, do some modeling, prepare some proper graph which will be acceptable to the journal. But you find yourself कि आप उसमें weak हैं और आपका student भी weak है, there's no problem. Try to find out somebody who will contribute to that. So he will shape up your data in such a way that it looks very convincing. It will also identify कि कहाँ गलतियां हो सकती थी आपसे, so that you can repeat the experiment. But to do that, you need to take up some course if you can afford, nothing like it. If you feel, no, I'm not good at mathematics, please
immediately collaborate with somebody, there's no harm. But generally हम लोगों को confusion रहता है कि 100% में से मैंने अपने student को share कर दिया और मैंने अपने HOD को कर दिया और बाकी ये नए बंदे को करूंगा तो मेरा तो dilute हो जाएगा. No. By doing so, if you publish 3 papers in a year, you will publish 5. Trust me. So that gets compensated for. Okay. So now what kind of a research is also a big dilemma? Okay. All the areas are good. I'm sure you people must be doing a lot of counseling, career counseling. So what are the good areas? Computer science is the best area. Data science is the best area because there are job opportunities which are good. So you should be honest with the student. Okay. But please tell them that you do anything in your life, forget about the career. If you do it properly, honestly, and you perform, okay, it is good. Best of the people around us are not those who are like, like they are the best in education. Somebody is good at startup, somebody is good at banking, somebody is good at anything. So similarly in research also, all the research are good. All the research areas are good, provided you do it in depth. Okay. So fundamental research, which is considered the heart of science. Okay. And also you must understand that there are so many problems in performing experiments. I work on the high temperature catalysis. तो मुझे gases लगती है, मुझे chemicals लगते हैं, मेरे reactors में problem आते हैं, maintenance का problem आता है. So many problems I face. मुझे बहुत grant लगती है instrument लेने के लिए. So fundamental researcher को लगता है कि अरे मैं तो कंप्यूटर पे बैठा हूँ, मेरे को केवल पढ़ना ही है और मेरे साथ वाला जो है वो तो बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है. He's playing with the colors. A biologist is looking at the microscope. There's so much of data. No, they have a problem also. So if you have a liking in fundamental research, please look into the positive aspect of it. Applied, we enjoy the targeted applications. तो हमारे बड़ा कभी मजाक चलते रहता है. जो लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं उनको हम लोग टीज करते हैं, कह रहे तुम लोग क्या बैठे हो, किताबें पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के सामने हो. ओके. और वो हमको टीज करते हैं कि तुम लोग ना जब तक एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारे सामने कुछ आ नहीं जाता तुम लोग बिलीव नहीं करते हो. ओके. सो यू आर नॉट साइंटिस्ट, तुम तो करके देखोगे. जबकि हम लोग में इतना दिमाग है और हमारे पास अच्छे टूल है और इतना अच्छा साइंस का नॉलेज है कि हम उसको आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा करके. सो बोथ हैव गॉट its advantages. So it's up to you to decide. There's something called focus research, which is generally in the private sector. Okay. Like space research, उनको एक satellite launch करना है, they are focused. There'll be say 100 components, वो एक को responsibility दे देंगे, दूसरे organizations को भी दे देंगे, and that's like the focus research. That way we all are quite blessed. कि हमको जिसमें अच्छा लगता है, जिसमें हमको लगता है कि नहीं हमें रिसर्च करनी चाहिए, we can do that. Okay. Product development is a focused research. So the message here is, if you want to do research in anything I like, tomorrow I want to work on climate change, अभी मैं waste water पे करना चाहता हूँ, फिर मेरे को drug chemistry पे काम करना है. If you are targeting a technology, okay, please try to understand it has to be a focused research. Okay. So we are lucky that way कि हमारे ऊपर ऐसा pressure नहीं रहता है कि unless there are people from the industry. Okay. What is also known as something like solution science. So, for example, at NIRI we work on the solution science. यहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री है जिससे वेस्ट वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है और वो वेस्ट वाटर से बाजू की लेक जो है वो कंटामिनेट हो रही है, या कोई एक इंडस्ट्री उससे जो एमिशंस निकल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है. तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी डोंट हैव टाइम कि हम 5 साल तक रिसर्च करेंगे. ओके. हमको वहां पे सोल्यूशन साइंस करना पड़ता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम. हम लोग जाके एमिशंस चेक करते हैं कि ये एमिशंस है, ये इंडस्ट्री है, उसके प्रोसेस के डिटेल्स ले सकते हैं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेटेंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पब्लिकेशंस. गेनिंग दोज नॉलेज वी ट्राई टू एडवाइस टू इंडस्ट्री कि आप ऐसा कर दीजिए तो आपके एमिशंस कम हो जाएंगे, या फिर कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दीजिए उसके ऊपर. ओके. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर एबल टू डू दैट for the industry, for the people who are suffering from that pollution, based on the research somebody has done and put it in the literature. अगर उन्होंने वो काम नहीं किया होगा, अगर किसी ने टेक्नोलॉजी किसी लेवल से डेवलप नहीं की होगी, तो हम उसको नहीं सॉल्यूशन ढूंढ सकते उसके लिए. Okay. So I used to often give some talks to the PhD students and I used to tell them, sorry, there is no category like research for PhD. Research is for research, to find out something new, whether it is theoretical or applied. And by doing so, you will get a degree.
ओके, तो यू शुड नॉट से कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी चाहिए. ओके, पीएचडी तो मिल जाएगी, पीएचडी डेफिनेटली मिल जाएगी. आप कितने अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट. इट इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट. ओके, तो रिसर्च में जो अप्लाइड रिसर्च हम लोग करते हैं जैसे नीरी में, उसमें एक बड़ा चैलेंज रहता है कि हमको कुछ एक कैटलिस्ट टारगेट करना है. तो फर्स्ट स्क्रीनिंग में हमको पता पड़ा कि 1 लाख कैटलिस्ट कंपोजिशन हमको दिख जाएंगे लिटरेचर में. उसके बाद हमको 5000 कैटलिस्ट पे लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको 100 कैटलिस्ट पे लाना पड़ेगा theoretically through literature, and then possibly we can synthesize 10, and then these 10 catalysts we will evaluate, और एक जो कैटलिस्ट वो पायलट प्लांट पे जाएगा. तो आपको उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सपोज आप नैनो साइंस या नैनो मटेरियल्स पे काम करते हैं. सो आई गॉट एन ऑड क्वेश्चन फ्यू इयर्स बैक कि ये सब सर ग्रांट के लिए होता है या आपको पैसे चाहिए, आप नैनो साइंस भी करते हैं. मुझे तो नहीं लगता क्योंकि नैनो साइंस का कोई एप्लीकेशन है. फॉर्चुनेटली कोविड ने सब क्लियर कर दिया कि कोविड में भी नैनो साइंस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन था. वो कह रहा था नैनो मटेरियल्स, और अल्टीमेटली मुझे ये समझाइए कि नैनो मटेरियल्स और नैनो साइंस कुछ लोगों के लिए कुछ काम आएगा क्या? किसी मतलब वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज कि गरीब लोगों के लिए कुछ काम आएगा क्या? वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ द नैनो साइंस बिहेव. ओके, किसी पार्टिकल को केवल छोटा करना नैनो पार्टिकल नहीं है. किसी पार्टिकल को छोटा करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देना नैनो साइंस और नैनो पार्टिकल है. ओके, फॉर एग्जांपल गोल्ड नैनो पार्टिकल से तो गोल्ड का कलर येलो होता है. तो आप उसको छोटा करते जाइए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि कोलाइडल शेप में रहेगा और गोल्ड पार्टिकल येलो की जगह आपको रेड दिखने लगेगा. दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग कि आपने उसको कलर ही चेंज कर दिया. केमिकल फॉर्मूला उसका AU था, येलो दिखता था मुझे, अभी भी AU है. केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने चेंज नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने केवल उसका साइज छोटा किया हुआ है. आपके पास कोई ऑर्नामेंट है, उस ऑर्नामेंट गोल्ड का ऑर्नामेंट को आप छोटा साइज कर जाएंगे, येलो ही रहेगा. और उसको जब नैनो साइज में लाएंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. दैट्स बेसिकली नैनो साइंस. सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, उसका सरफेस एरिया हम बढ़ जाते हैं. सो द क्वेश्चन वाज, डू यू रियली नीड नैनो? एंड द आंसर वाज यस, ऑफ कोर्स. To interpret the natural processes, to learn from them. आज वायरस कैसा बिहेव कर रहा है, किस एम्बियंस में, नैनो साइंस की जरूरत है. To judicially use the resources. क्यों? यदि आप नैनो मटेरियल यूज करते हैं तो जो काम 1 kg ऑफ मटेरियल यूज करके होगा वो 1 ग्राम में आप यूज कर सकते हैं. They are so active. To understand environmental problem. Okay, many new properties are there. We can virtually change the applied science. Again the question, आपने इसमें गरीबों के लिए क्या कर दिया? ये सब ठीक है, ये आपका साइंस है, बहुत बढ़िया है, बहुत हाई फाई है and everything. Okay, you know like we are increasing our population like anything. We need resources. We don't have resources. तो यदि आप 1 kg की जगह 1 ग्राम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो हजारों लोगों में मटेरियल उतने काम आएगा. That was our first requirement. Okay, this we can ignore. This is the predicted market of nanotechnology. क्योंकि हर चीज में आज जो मोबाइल हमारे पास में 20 साल पहले अपन इमेजिन नहीं कर सकते कि मोबाइल will do all these jobs. Okay, so it is really, and believe it, every maids of us, सबकी मेड के पास में मोबाइल रहता है. तो उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है. वो आज 4 लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी में आज जो सोलर का इनोवेशन है, ओके, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. तो एक गरीब को जो पहले नहीं मिलता था उसको गवर्नमेंट ने एक सोलर वो दे दिया है, पैनल दे दिया है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. सो दिस इज नाउ द सेकंड. इफ यू सी द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, दिस इज समथिंग टू डू विद द पुअर पीपल. सो nano fertilizers, nano materials contributed to agriculture, nano materials contributed to health. So try to understand and try to explain to the people and the students that no, they are useful for everything, whether it is food, drug delivery, construction, and everything. And there was an interesting article as old as 2007 I could find that the nanotechnology can contribute greatly to tackling the global poverty. So it looks very hi-fi कि नैनो साइंस पे काम करते थे 15 साल पहले, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भिड़े रहते थे. No, it has implication on everything, even the poverty alleviation. Okay, so generally it is known as the research is playing in dark, but it is still accurate. Okay, so you are contributing. Now we should also understand the difference between jugaad and research-based innovations. Okay.
फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर है जिसमें ऐसे बहुत पिक्चर आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक बड़ा दिमाग लगा के छाता किया हुआ है और छाते से वो पानी कलेक्ट कर रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नॉट अ बैड आइडिया, ओके, नॉट अ बैड आइडिया. लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं उसके रेप्लिकेशंस हो सकते हैं. क्या कि वो खुद कैरी कर रहे हैं, ओके, और ज्यादा से ज्यादा 10-15 लीटर वाटर कैरी करेंगे, लेकिन वो वाटर को कैरी करते समय उनको इधर उधर उसको ले जाना पड़ेगा. पता पड़ा उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, उनकी पीठ का दर्द शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने मेडिकल में 1 लाख 2 लाख रुपए उनके इन्वेस्ट हो गए. तो कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर इज रियली गुड, बट टू मैनेज इट एंड यूटिलाइज इट वाज नॉट समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. तो आप उसको साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग अप्रोच से करेंगे तो नहीं बोलेगा हाँ एक एरिया है छाता में, बड़ा एरिया रहता है इसलिए पानी आ गया उसका, उस पानी को हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको कैरी नहीं करना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ छाता हम जहां जहां पॉसिबिलिटी थी रूफ टॉप पे हमने वो कर दिया. तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन साइंटिफिकली. ओके, so there is a much difference between the jugaad and the technology and innovation. Sometimes jugaad may be perfect, but that's rare, let me tell you frankly. Okay, or even whatever the jugaad is usko hum साइंस और टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट्स लगा के जो बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसके शॉर्ट टर्म रेप्लिकेशंस मालूम नहीं है. ओके, या शॉर्ट टर्म रेप्लिकेशंस मालूम है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं मालूम है. सो फॉर लॉन्ग टर्म रेप्लिकेशंस, okay, any doctor will tell you कि come on, please don't ask him to carry so much of water like this, मतलब उसके backbone में उसमें problem आएगा. Then there are many other aspects we need to learn, like life cycle assessment, techno-economic feasibility और sustainability. तो उसके लिए साइंस और साइंटिफिक टूल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. Okay, now work plan is an important thing, but the work plan depend करेगा कि आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं. Okay, and accordingly you need to understand the methodology to plan that. Experimental जो रिसर्च होती है, experimental based research होती है, like I work on the material science, I would say. So chemistry, material science or chemical engineering. So we know, like we need to do the synthesis of material, then characterization of material, in which the physical properties will be there, chemical properties will be there. Then we'll try to evaluate those things. Okay, and then if we do not get the expected result or purity, then we need to repeat. So it's all based on the logical things, but you can have some SOP, standard operating procedures, and you can divide into this kind of a schematic and keep on showing to your student. Okay, you need to do like this. Chemistry का एक example लेते हैं. I hope there are enough people of chemistry or chemical engineering background. For example, materials. Okay, this is one thing I found we give a lot of importance of these things in Japan. और इंडिया में थोड़ा सा कम है. मेरे जितने स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आते हैं मैं उनको हमेशा बताता हूँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज फॉरगेट. ओके, ऑलवेज फॉरगेट. जैसे मैं बहुत कैटलिस्ट कंपोजिशन पे काम किया, मैंने मे बी सम 400-500 कैटलिस्ट कंपोजिशंस पे. तो मेरे को एक कैटलिस्ट बनाना है जो कि, फिर से हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन बेस्ड. उसमें आयरन है, उसमें से और कोई मटेरियल है, मे बी कैल्शियम बेस्ड मटेरियल. तो आयरन है और मुझे कैल्शियम, तो मुझे आयरन का एक सॉल्ट चाहिए, मुझे कैल्शियम का एक सॉल्ट चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि वाटर सॉल्युबल. तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, कुछ नाइट्रेट ले लीजिए, जनरली वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम का भी कुछ ले लीजिए. स्टूडेंट ऑब्वियसली ब्रिलियंट रहा तो फटाक से देख लेगा कि व्हाट इज वेदर देयर इज प्राइमरी स्टैंडर्ड. अब मुझे 2.725 ग्राम कैल्शियम का कोई सॉल्ट वे करना है और 3.534 ग्राम मुझे आयरन का सॉल्ट करना है, आयरन सल्फेट और आयरन नाइट्रेट. अगर उस स्टूडेंट को दिख गया कि वहां पे कुछ मॉइस्चर है और पूरा लिक्विड लिक्विड हो रहा है, तो वो तुरंत आ जाएगा कि सर कैसे करेंगे इसको. वो मान लीजिए उसको नहीं दिखा, सॉलिड दिखा, तो पट से वे कर लेगा. उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें कितनी इंप्योरिटीज है, नहीं मालूम उनको. यदि आप कैटलिसिस पे काम करते हैं, फोटो कैटलिसिस पे काम करते हैं, तो इवन फ्रैक्शन ऑफ फ्यू mgs, फ्यू नैनोग्राम भी वहां रहे तो प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. तो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि बाबा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड. की यदि मैं 1 ग्राम इसको वे कर रहा हूं तो वो 1 ही ग्राम है, 1.01 ग्राम नहीं है. देन सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज. ओके, इट्स लाइक डिफाइनिंग डार्कनेस. फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रहा हूं मेरी लैब में, मैं देख रहा हूं कि अरे आज तो यहाँ पे बहुत सारा जो AQI इंडेक्स हम लोग देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बोल रहा है कि भोपाल में बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है, तो उससे हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है.
तो केवल आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, जिस लैब में आप कर रहे हैं वहां भी पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। अब जब आप कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं वो पार्टिकल्स ऑब्वियसली उसमें गिर रहे हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे टेबल में घर के ऊपर इतनी सारी डस्ट रहती है, उसको हम क्लीन कर देते हैं। So there is something called clean room, but most of the places do not have a clean room, except for those who are working on the semiconductors or photocatalysis. Now you can expect कि ये जो particles हैं ये मेरे synthesis में गिर रहे हैं, और यदि मेरी synthesis 2 दिन की है 48 hours की और मैंने properly उसको cover नहीं किया, तो I can expect कि जितनी particles और धूल मेरे table पे थी उतनी मेरे material में जा रही है. So these are the things which we need to sensitize to the people so that they should not land up in a problem. तो मेरे पास मैंने कई बार ये प्रॉब्लम अपनी खुद की लैब में वो फेस किए हुए हैं. I used to carry 20 materials to Japan and analyze using a very good tools. And then suddenly we will find कि इसमें आयरन दिख रहा है, जबकि आयरन तो मेरे कंपोजिशन में था ही. इसमें एल्यूमिनियम दिख रहा मेरे कंपोजिशन में नहीं था, सिलिकॉन दिख रहा मेरे कंपोजिशन में नहीं था. Then I realized कि the source of silicon and aluminum could be impurities, dust impurity in my material. And we had techniques to characterize it. Okay, so we need to not only tell them, teach them, but we need to train them. जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा सब ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहने हैं, ये पहने, पीपी किट पहने हुए हैं. While in the lab people are not so serious about the apron पहनना या वेंटिलेट करना या क्लीन प्लेस यूज करना या बेसिक फैसिलिटी जो है फ्यूमिंग कबर्ड यूज करना, उसको क्लीन करना, या फर्नेस के ऊपर कुछ लगा हुआ तो नहीं है डिपॉजिट, उसको क्लीन करना. एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट ट्रेनिंग. ओके, नाउ वी डोंट बॉदर अबाउट द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी. वहां पे मैंने देखा हर लैब में एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर रहता है. अभी जैसा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है इंडिया में, कुछ एक्सपेरिमेंट जिसमें होंगे कि वो आपने आज किया, दूसरे स्टूडेंट ने 1 महीने बाद किया, देयर इज अ difference may be because of this, which we ignore. Then comes the experimental record book, which should have somebody is trying to write something. It's not good. Please don't do that. Okay, or if your kids are doing that, please stop them. I can see the yellow lines on the screen. Please don't do that. So this is how we do the experiment. Have courage and patience to repeat the experiment. Okay. Never prefix the story. Never prefix the story. कि मैंने ये टारगेट किया हुआ है, मुझे यही मिलेगा. You can land up in serious problem. I can tell you. Okay, you can land up in serious problem. Preparation, we need to spend time. बहुत शांति से करना है हमको ये. Okay, and data, as I mentioned, quality of data should be good. Documentation should be good. Now comes the resultant discussion. This is the most important part in experimental work. Okay, we got a raw data, treatment of data, consistency of data, statistical justification of the data is very important. Please don't ignore the outlier, especially if it is coming every time. Suddenly आपको एक temperature बहुत peak मिल गई और आपने बोला अरे नहीं outlier, इसको explain करना मुश्किल है. That's something you should keep it separately and discuss with the experts कि मुझे ये मिल रहा है, gas chromatography में ये मिल रहा है. Okay, so it is very, very important to check the quality of data and then interpret the data. And then if you are finding something unusual जो कि different है, it could be a very interesting research. उसको repeat कीजिए और वही data यदि दोबारा आता है तो you got a first glimpse की शायद something really good. Don't take it negatively. Always try to interpret. It could be a problem because of the purity of the chemical, furnace ठीक नहीं है आपकी, but if it is not, आपने rule out कर दिया, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अरे चलिए हम डीरी में रिक्वेस्ट करते हैं किसी CSR लैब के पास में, एमप्री भोपाल में या किसी IIT में हम रिक्वेस्ट कर देते हैं सर मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, कैन आई रिपीट माय एक्सपेरिमेंट अंडर योर फैसिलिटी, प्लीज अलाउ अस. वहां भी जाके होती है, बहुत अच्छी बात है. व्हाट वी शुड नॉट डू, वी शुड नेवर सेलिब्रेट विद द रिजल्ट. ओह माय गॉड ये आ गया, मेरा मजा आ गया. Like we need to consider many things. You should celebrate once it is published in a great journal or it is turning into something very useful. Never bend the result to reach goal. That is basically known as a scientific misconduct. कि मुझे कुछ भी डेटा आया मुझे तो यही लिखना है, वो मेरा टारगेट था कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव था PhD का, मुझे ये करना है. ओके, ऑलवेज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए. ओके, सो
never prefix the story. That's number one, which is very 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 difficult. कोई भी एरिया हो आपका, आप एब्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं, मुझे CO2 को एब्जॉर्ब करना है, मुझे आर्सेनिक को वाटर में से निकालना है, इतना एब्जॉर्प्शन करना है, तो मेरा वो माइंडसेट हो जाता है कि my mindset will be कि oh no, I want this kind of research result. If you are unlucky, I would say unlucky, तो आपको आपके expected result मिल जाएंगे, आप उसको repeat भी नहीं करोगे. So take it like that. If you are lucky, आपको आपके experiment में result ठीक नहीं मिलेंगे, तो आप repeat करोगे, and that's the best thing. Okay, always question why and how. Okay, if you question these two, why and how, why I am getting like this, how I am getting like this, that's basically the fundamental of research. Now the next leg of our talk, probably the last leg of our talk, is reporting our research. Okay, writing a publication, which is very very important, because that gives you the basic opportunity कि आप अपनी रिसर्च को लोगों तक लेके जा रहे हैं, साइंस तक लेके जा रहे हैं, ताकि वो किसी के काम आए. नंबर वन. नंबर टू, उससे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपका करियर ग्रोथ हो रही है क्योंकि आप पब्लिश कर रहे हैं, उसी से आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. सो पब्लिशिंग अ रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऑल दीज आर बेसिक्स. यू कैन गो थ्रू द लिटरेचर. इनफैक्ट मैंने एक डॉक्टर गौर थे JNU से, उनकी स्लाइड्स ली हुई है काफी सारी. ही इज वन ऑफ द best person to talk about the ethical issues and the publications. Okay, एक हम लोग ये फिर से बहुत से इंस्टीट्यूशंस में होता है, स्पेशली जापान में मैं देखता था कि पैनल बनाते थे वहां पे. ओके, एक पेज का 2 पेज का पैनल बनाते थे कि ये हमारी रिसर्च फाइंडिंग है, और वो ऐसा रख देते थे और उस पे 4 लोग बैठ के डिस्कशन करते थे कि ये मेरा प्रॉब्लम था, ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे सब कुछ मेरे सामने है. ओके, नाउ उस पैनल में हम लोग फिर उसको ट्राई करते थे कि कैसे उसको, स्टोरी इज अ बैड वर्ड, ओके, एक्चुअली कैसे हाइपोथेसिस देनी है, क्या इंट्रोड्यूस करना, क्या एक्सपेरिमेंट पार्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नंबर वन, वी शुड आइडेंटिफाई. और क्या क्या चीज है जो यूनिक लग रही है. जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था कि वो यूनिक चीज ऐसा तो नहीं हम उसको पेटेंट फाइल कर सकते हैं, किसी ने रिपोर्ट ना किया. तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखिए, क्या लिमिटेशंस है आपके डेटा के और जो आपने पेपर लिखना है उसमें, और क्या चीज है कि जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही है, जिसका मैं एक पेटेंट फाइल कर सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा जर्नल टारगेट कर सकता हूँ. ओके, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रिसर्च आउटकम. रिसर्च आउटकम मींस एज अ पब्लिकेशन इज अ रिसर्च आउटकम, पेटेंट इज अ रिसर्च आउटकम. One is a research problem. You should always work on research problem which you are able to do that. Okay, as I mentioned, all the research problems are good. आपकी कैपेबिलिटीज पे और आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है. गुड डॉक्यूमेंटेशन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मैच विद योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, एंड कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज. ओके, नाउ राइटिंग अ साइंटिफिक पेपर, दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. अभी हम लोग बहुत लकी हैं कि लास्ट 5 इयर्स में एक ट्रेंड देख रहा हूं मैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं. आप चाहे तो 1 पेज का एक लेटर टू एडिटर भी डाल सकते हैं, आप एक राइट अप डाल सकते हैं, आप एक स्टोरी डाल सकते हैं. Not necessary कि वो properly structured है, which is very good. और बहुत सारे reputed journal जो है वो भी उसको allow करते हैं. उसका importance भी होता है कि letter to editor भी आया है और पता पड़ा nature में आ गया, तो it has its own importance. So this is a typical structure of a paper which we all know. Title, author name, abstract, introduction, material, method, result, discussion. Okay. Now you also need to be little professional in writing a paper. What do you mean? You need to attract the people so that they read your paper and it reaches to the scientific community. और आपको उसका benefit मिलेगा कि आपके citations भी बढ़ेंगे, आपका recognition बढ़ेगा. So title is quite important. आपने बड़े interesting titles देखे होंगे आजकल. दूसरा, title और keywords ऐसे होने चाहिए कि जिससे जो इंडेक्सिंग सर्विसेज है लाइब्रेरी की, रिट्रीवल सर्विसेज है, ओके, ब्राउजिंग सर्विसेज हैं, उसमें वो फिट होना चाहिए. आपने पता पड़ा कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड काम किया हुआ लेकिन उसको टाइटल में नहीं दिख रहा है और कीवर्ड्स में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज डाली हो जो सामने वाले रिसर्चर को चाहिए थी लेकिन आपके टाइटल और कीवर्ड्स में नहीं है, तो उसको सर्च करने में नहीं मिलेगा वो, और आपका एक साइटेशन चला जाएगा. और मोर इम्पोर्टेंटली वो जो रिसर्चर है हो सकता है आपका काम रिपीट करे, वो फिर उसके हाथ में लिटरेचर नहीं लगेगा.
So please give a lot of importance to the title as well as the keywords. Then the abstract. This is another important thing, और मेरे ख्याल से हम लोग सारे लोग हैं कि जो abstract पढ़ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस पेपर में और कुछ मिलेगा कि नहीं हमको, because there are thousands of papers being published in any area. So आज मेरे को कुछ चाहिए तो मैं केवल abstract पढ़ूंगा, और abstract से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे काम का है कि नहीं. So abstract again should be really good. उससे आपको भी recognition मिलेगा और सामने वाले जो रिसर्चर है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा. ओके, सो दीज आर द टिपिकल कंपोनेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. मेजर पर्पस क्या था आपका, बेसिक प्रोसीजर आपने क्या थी. जैसे मैं कुछ जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हूं तो हम लोग वो देखते हैं, उसमें वो बड़ा कॉमन सेंस से आता है. वो एक बार आप पढ़ेंगे, आप लोगों में मैक्सिमम लोगों को जो ऑलरेडी पीएचडी किए हुए उनको आइडिया भी होगा इस चीज का. एब्स्ट्रैक्ट में हमको पर्पस मालूम होना चाहिए, क्या मैंने प्रोसीजर की, मेरी मेन फाइंडिंग क्या है और मेरा कंक्लूजन क्या है, पूरा जिस्ट होना चाहिए. Then comes introduction, which should be brief, which should be focused. Okay, most important thing is पहला कमेंट आपने देखा होगा कि आपको मिलता है कि आपके रेफरेंसेस बहुत पुराने हैं. So we should be 100% confident कि मैंने 2015 के बाद में यदि रेफरेंसेस नहीं दिए तो I should be able to say confidently कि नहीं, उसके बाद का कोई रेफरेंस है ही नहीं, किसी ने काम ही नहीं किया. Otherwise it is a mandatory to have the recent references. Without repetition of knowledge, aims and objectives. ये सब practice से आता है, and you must also be already expert. Then introduction, try to introduce references, don't avoid them. If you put more references, always try to understand one tricky thing कि आपका जो एरिया में आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, तो अच्छे जर्नल्स वाले क्या करेंगे, आपसे भले उन्होंने 4-5 रिकमेंडेशन मांगी हो पोटेंशियल रिव्यूअर की, बट दे विल ट्राई टू सेंड दैट पेपर टू समबडी हु हैज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन दैट एरिया. और यदि उनके पास गया और उनका रेफरेंस आपने नहीं डाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फील ऑफेंडेड कि मेरा रेफरेंस नहीं डाला, मुझे गुस्सा आ गया. सेकंड थिंग, दे विल डाउट कि आपने मेरा रेफरेंस या किसी का रेफरेंस इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उसने कुछ काम कर दिया होगा ऑलरेडी जो कि आप रिपीट करना चाहते हैं. So be very very careful in referencing. Okay, state clearly, वो तो सबको मालूम है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डालना चाहिए. Avoid repetition. Okay, statement of objective बहुत क्लियर होना चाहिए. Now materials and method depend on what area you are working on. Okay, the main purpose is to provide enough details. Whether you are writing a patent में fortunately वो रिजेक्ट कर देते हैं यदि आपने केमिकल का नाम नहीं लिखा, इवन उसका मेक नहीं लिखा और सप्लायर नहीं लिखा, तब भी पेटेंट पे वो एक्सेप्ट नहीं करते. पब्लिकेशन में भी आजकल मांगा जाता है किस मेक का है. उसका कारण ये होता है कि उसकी रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए. ओके, सो ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब आप काम करते समय अपने स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली ट्रेन करेंगे और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा शीट है उसमें ऑलरेडी कॉमन कॉलम्स बने रहेंगे. ऊपर वो रहेगा कि किस मेक का है, कितना टेम्परेचर है, किस डेट में किया हुआ है, and all that. Okay, so please be very very careful about these things. These are all guidelines you will find in standard methodology. Okay, if you are using new methods which is not published, then we need to provide all the details, but do it proudly because that will help you strengthening your paper. You can also separately publish कि मैंने ये एनालिसिस की नई मेथड यूज की है जो कि इसमें रिपोर्टेड नहीं थी. ओके, एंड इफ यू आर पब्लिशिंग प्रीवियसली उसको रेफरेंस दीजिए. Results, answers to the objective, which should be very clear in the result. Expose the experiences logically sequenced. Okay, superfluous results बिल्कुल avoid करने हैं हमको. Do not remove those that invalidate the initial hypothesis. You can give as many as possible data, but in a proper way. There's a way to write the data. There's a way to treat the data. There's a way to do the statistical analysis. Okay? Do not repeat. Discussion is probably the most important thing. बट उसमें सबसे बड़ा हमको यदि वो करना है, किसी को ट्रेनिंग देनी है तो हमको उसको ये बताना है कि प्रीजुडिस ना रखें. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मेरा एम था, उसको हम दिमाग में रख के यदि इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप कुछ भी रिजल्ट आया आपके पास, इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल, कुछ भी डेटा गलत आया हो उसको आप इंटरप्रेट करके रहेंगे. फिर दैट इज द मेजर कॉज ऑफ अनइंटेंशनल अनएथिकल प्रैक्टिसेस. मेजर कॉज, क्योंकि हम लोग इतना उस प्रेशर में रहते हैं और हम लोग इतना ऑक्युपाइड भी रहते हैं कि स्टूडेंट लेके आ गया तो हमारे पास तो 10 स्टूडेंट हैं, कैसे चेक करेंगे,
ऊपर से मेरे को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखनी है, एग्जाम के पेपर भी एडिट करने हैं। तो प्रीजुडिस ना रखें जब भी आप डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं। वी शुड बी एक्चुअली अगेंस्ट द डेटा। अच्छा ये आया क्यों है, दोबारा आया क्यों आया, कैसे आ गया, कुछ गलती नहीं हुई, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड काम था, आपको कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली। वी शुड क्वेश्चन एंड वी शुड हैमर आवरसेल्फ एंड टू आवर स्टूडेंट कि कम ऑन, यू आर नॉट शोइंग एनी, you are not showing any impurity. How it is possible? कहाँ पे आपको clean room मिल गया, कैसे आप काम कर रहे हैं? So unless you are damn sure, you should not do that. Okay, avoid prejudice. एक बार कीजिए, उसके बाद में you should be happy, convinced. Okay, tables express in a tabular way in a concise result, which will help the reviewer. Okay, which will help the readers also. So there are very beautiful ways to present the tables and the graphs. Figures में तो बहुत ज़्यादा revolution हो गया है, 3D and whatnot, 4D. We should avoid grid, lines, frame. Nowadays there are tools through which you can do fantastic tabling and the pictures. Okay. Now the last is the citation. So there are different patterns by different journals, and they will help you. Okay. So we should follow that. We should follow either author and year or the numerical sequence. That depends. That's a part of the training of the research methodology we should give to students. We can do that. Okay. Then bibliographic elements, जैसे for example journal है, तो उसमें typical एक pattern रहता है. We can view that. Book का एक अलग pattern होता है, chapter और book का अलग होता है, patent का अलग होता है. And these are part of the training हम लोग अपने student को दें और जो young researchers हैं उनको देना चाहिए. Okay. Managing references is very complex, and nowadays it has become equally easy. Okay. For example, searching literature, we have Google Scholar, ResearchGate, and so many tools. Okay. But there are popular what we call as managers like Mendeley or EndNote or Zotero. So individual, यदि आप ये सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, यदि परचेज कर सकें आप आपके कॉलेज के लिए, so those are the people who will also provide you training. That will help you greatly. आपका time save होगा उसमें, and many other possibilities are there, and you can make your research article very kind of impressive. Okay. For example, Zotero, one of my colleagues use. Okay, and it can be done easily. So I'm not going to go in the details of this training, but then you can take it from some professionals or जो libraries हैं आपके यहाँ पे भोपाल में अच्छे colleges की, वहाँ पे आप visit कर सकते हैं. तो वहाँ I'm sure they will be happy to provide these kind of a training. Okay. Now these are the things to avoid. First of all, vague research question नहीं होना चाहिए. Okay. Using complex language, क्योंकि उससे एक impression जाता है कि आप clear नहीं हो, आपके result ठीक ठाक नहीं है, इसलिए आप हिंदी में बोलते हैं ना कि गोल गोल करके लिख रहे हो. You are trying to confuse the reviewers as well as reader. Don't do that. Grammar and spelling, nowadays there are tools available, but I can understand everybody struggles. Even I struggle because we are from, say, not necessarily all of us are from the English background, and the English services generally are very expensive. So we need to manage with that. Maybe you can get some training. Incorrect grammar, then poor abstract, disorder, floating elements. Try to write small articles, but it should be a very clear, okay, lucid in the language. It should be very clear. The last is 9th is a plagiarism, जो कि बहुत बड़ा इशू हो गया है. अभी आपने सुना होगा कि यूजीसी ने इतने जर्नल्स बैन कर दिए, okay, इतने लोगों के अगेंस्ट एक्शन हो गया. So let us spend some 10 minutes on this plagiarism. Okay. So these are basically the ethical issues. Okay, so ethical issues has become a big problem in academic and scientific world, and you will not believe CSIR is very strict about it nowadays. We have a committee actually. I'm also part of that committee. उसकी committee है, regularly हम लोग cross check करते हैं, उसकी report जाती है. Okay, so there are different definitions. Okay, but I can understand कि हम लोग common sense से समझ सकते हैं कि हमसे कहाँ गलतियां होती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है. Okay, it's called research misconduct. Okay, perhaps the most important point here is the intention, which leads to the misconduct and unethical publications. So there are two things most important. Intentional, अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो सीधा पनिशमेंट होता है कि आप इंटेंशनली डेटा फैब्रिकेट कर रहे हैं, आप इंटेंशनली गलत चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको तो केवल यही होता है कि ठीक है, आपको भी if somebody caught you, there should be some consequences. My major worry is unintentional.
You are a serious researcher, you are very honest, you are very ethical. But there are hundreds of possibilities through which you can report wrong data, you can get wrong data without knowing, and you get into trouble. So we need to save those people. We need to train them, which comes with the research methodology. जो मैंने अभी तक बताया आपको कि डेटा जनरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, कंटामिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये जब डेटा मिलेगा और आप उसको पब्लिश करेंगे, फर्स्ट डाउट जाएगा कि नहीं, इन्हें जानबूझ के किया हुआ है, जबकि आपने इंटेंशनली नहीं किया है. सो अवॉइडिंग अनइंटेंशनल मिस्टेक इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. ओके, क्योंकि वहां आपको ये प्रूव करना है कि मैंने इंटेंशनली किया था कि अनइंटेंशनली किया था, बड़ा डिफिकल्ट होता है. So intentionally misleading readership by plagiarizing large marks. Plagiarism is one more thing I think which can be taken care. अभी आपके पास में जो tools आ गए हैं, हम लोग authenticate use करते हैं, उस authenticate में सब कुछ आ जाता है. तो जब मैं पहली बार अपना पेपर लिखूं, मेरा स्टूडेंट जैसे लिख के लाता है, तो कई बार उसमें 30% plagiarism होता है, 40% plagiarism मिल रहा है. So there are two different things. One is a plagiarism. Plagiarism का मतलब कि आपने किसी का और जो है उस वहां पे छाप दिया है. तो उसके लिए हम लोग बहुत लकी हैं. अभी 20 साल पहले कुछ भी टूल्स नहीं थे, तो प्लेगरिज्म ना तो चेक होता था, ना ही हम उसको अवॉइड कर पाते थे. आज हम लोग वो टूल में डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आपने पेपर वो फीड कर दिया अपना, वो फटफट आपको बता देगा ये इस रेफरेंस का, वो रेफरेंस का, वो रेफरेंस का. तो आप वंडर कर रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट का भी कई बार 20% प्लेगरिज्म आता है, 30% प्लेगरिज्म आता है. उसका कारण है, कारण ये है कि सपोज आप ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं. अब पूरी दुनिया को मालूम है कि ये CO2 रिलेटेड प्रॉब्लम है. अब आप उसका इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो आप कैसा लिखेंगे? से बिकॉज ऑफ द एनहांस्ड CO2 जनरेशन इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. दूसरा जो है रिसर्चर वो लिखेगा CO2 is emitted from different sources and the total CO2 is too much which is leading to global warming. तीसरा रिसर्चर और कुछ ट्राई करेगा. अब एक महीने में कम से कम 2-3-4 हजार लोग ग्लोबल वार्मिंग पे पेपर पब्लिश करते हैं. अब 1 मंथ में यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग को 4000 तरीके से डिफाइन करना पड़ा तो वो इम्पॉसिबल चीज है. इट्स सिंपली इम्पॉसिबल. हाउ कैन यू राइट? सो आई ऑलवेज से कि जो इंट्रोडक्शन में प्लेगरिज्म होता है वो जनरली अनइंटेंशनल होता है, बट ये टूल से आपको मालूम पड़ जाता है कि आपने जो लिखा है, एंड यू विल वंडर कि मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो प्लेगराइज हो रहा है. इट्स ऑब्वियस. कोविड सार्स वायरस वाज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस. नाउ 5 लाख पेपर हो गए. अब आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? वो तो प्लेगराइज होना ही आपका. इसका ऑप्शन है, कोशिश कीजिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो यदि प्लेगराइज होता है तो उसका रेफरेंस डाल दीजिए, उसको क्लियरली लिख दीजिए. As per this reference, as per this, this is the global warming reason for global warming. आपको कुछ बड़ा अवार्ड नहीं मिलने वाला यदि आपने नई डेफिनेशन लिख दिया, तो उनका रेफरेंस दे दीजिए. So we need to be always practical. We need to be cautious. Now, let's worry more about this. Forced to publish. अब उसमें एक और आता है कि कोई जिसे बोलते हैं ना कि वो इंसान चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसे पैसे नहीं है. तो हमें इसमें भी जाना चाहिए कि कोई इंटेंशनली स्टूडेंट है या कोई और इंसान है, वो क्यों प्लेगराइज डेटा कर रहा है और क्यों फॉल्स रिपोर्ट कर रहा है डेटा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है. देयर इज अ फोर्स टू पब्लिश मोर. ओके, चाहे स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज हो. ओके, उससे वो प्लेगरिज्म भी अवॉइड करता है, उससे डेटा फैब्रिकेट करता है, उससे फॉल्सिफिकेशन भी होता है. सो ये कुछ सोशल इश्यूज हैं बेसिकली, जिसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट होते हैं कि हम ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं. क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि जिसमें हम इवैल्यूएट करें स्टूडेंट को, रिसर्चर को, कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने इतना डेटा पब्लिश जनरेट किया हुआ है, बट समहाउ यू आर नॉट एबल टू पब्लिश, बट वी अप्रिशिएट योर रिपोर्ट, योर हार्ड वर्क. इसलिए आजकल बहुत डिबेट हो रही है कि इम्पैक्ट फैक्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए. अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया और नहीं हो रहा है पब्लिश, 1.5 से ऊपर नहीं जा रहा है, बट आई थिंक इट्स ओके, नॉट नेसेसरी. अदरवाइज वो क्या होगा कि हम रिसर्च स्टूडेंट को थोड़ा सा वो करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, अरे तुमने ऐसा करना चाहिए था. वो 4 कमेंट आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारी एक्टिविटी 80% है और ऑलरेडी 85% रिपोर्टेड है.
उसको लगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं कि जिसने 85 लिखा वो करेक्ट लिखा है कि नहीं, वो कोशिश करके मैं 86 लिख देता हूँ, मेरा डेटा पब्लिश हो जाएगा। We need to avoid that. So it's our moral responsibility to recognize hard work, honest work, which may not have given the great result, okay, and to identify them. Okay? So this is a big problem, scientific ethics के जो reasons है कि क्यों हो रहे हैं करके, okay. So to meet the ever increasing publication, हमारे में तो नीरी ने इतने कर दिया, एनसीएल ने 500 कर दिया, आईआईसीटी ने 600 कर दिए, कंपटीशन हो गया, नेक्स्ट ईयर नीरी को भी 500 करना है, ओके। सो ये सब नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। So these are the major causes of why plagiarism is misconduct हो रहा है, ओके। और बहुत उस पर आपको लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आई रेड अ लॉट क्योंकि मैं कमेटी का पार्ट था, ओके। तो उसमें कई बार सिस्टम की भी फॉल्ट होती है कि हम लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज प्लेगियरिज्म, कॉपिंग समबडीज वर्क, citing a source inappropriately, failure to cite a source। इसको मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा। यदि आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, there is no problem in giving instead of 10 आप 50 रेफरेंसेस डाल दीजिए। हर जगह आप कुछ लिख रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं से साइटेड है, उसको साइट कर दिए, उसको आपको 2 फायदे होंगे। कभी आप ट्रबल में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि नहीं आपने तो रेफरेंस दिया हुआ है, ओके। दूसरा, इट विल enhance like your reputation। Then what are the consequences? एक बार ये प्रूफ हो गया कि आपने कुछ गलत काम किया है, ओके, तो उसके बाद में उसके consequences होते हैं। तो वो I think let's not go on that। जैसे नीरी का अपना सिस्टम है, CSIR का, आपके UGC का कुछ और सिस्टम है कि आपको इससे बैन कर दिया जाएगा, उससे बैन कर दिया जाएगा। Just hold on for a minute, I'll try to stop this noise, just 1 minute। I'm not sure how long they continue to do that। So बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी आए हुए, एडिटोरियल्स आए हुए हैं कि the urge to publish more and its consequences। सब जगह जो प्रेशर दिया जाता था, जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके पब्लिकेशन कितने, पेटेंट कितने हैं, वो कितने यूजफुल है, बड़ा मुश्किल जाता था। उसके बेसिस आपको प्रमोशन मिलेंगे या आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा। एकेडमिक वर्ल्ड में भी वही होता था। तो उससे ये चीजें बढ़ी हैं, एंड इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके। एच इंडेक्स हो गया, जैसे मैं अभी मैडम ने बोला था हमारा एच इंडेक्स इतना है, तो ठीक है, आई गॉट अपॉर्चुनिटी, हम लोग की अच्छी टीम थी तो पब्लिश कर दिया, बट आई हैव द इक्वल रिस्पेक्ट जिससे मेरे 1/4 पब्लिकेशंस। आई डील विद वन नेशनल एक्सपर्ट इन एनर्जी, और उनका जब सीवी में बार बार पढ़ता हूँ तो उनके कुछ ही इज टॉप नॉच रिसर्चर एंड टेक्नोक्रेट आई वुड से। उनके कुछ तो भी 10 या 12 पेटेंट है, उसमें से 10 जो है कमर्शलाइज हो चुके हैं, और शायद 30 पेपर है उनके बस। I don't mean कि किसी ने 400 पेपर पब्लिश किया तो he is really not good, he is very good, no doubt about it, but किसी ने 400 नहीं किए, still he is good, okay। So plagiarism में मैंने देखा है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मोस्टली अनइंटेंशनल होता है। जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज पे या ग्लोबल वार्मिंग पे आपको लिखना है, तो आप कैसे अलग से लिख सकते हो? हजारों लोग, लाखों लोग वही लिख रहे हैं, ओके। और जो अपने इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर भी एक्यूजेशन थे, जो कि मैं 100% श्योर हूं कि वो सब अनइंटेंशनल था। कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे और उसका कोई स्टूडेंट लेके आता है जिसने प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है और उसका टूल्स भी नहीं होते थे, ओके। सो easy ways to protect yourself is write in your own language, okay, so that you will also be improving your writing skill। Use as much as possible your own observation and result। Try to write a small manuscript, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मत डालिए, ओके। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका जैसे ऑथेंटिकेट आपने यूज किया और आपके इंस्टीट्यूट का पॉलिसी है कि 10% से ज्यादा प्लेगियरिज्म नहीं होना चाहिए, प्लीज बी वेरी केयरफुल। पता पड़ा आपका 40 पेज का पेपर है, उसमें से 3 पेज आपके स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो वो दिखा रहा है 9%। आपने बोला ओके लेस देन 10%। बाद में पता पड़ा कि वो 9 के 9 पेजेस कहीं से गलती से उसने ले लिया है। यू आर कॉट। सो उसको देखिए पलटा के कि क्या किया हुआ है। पता पड़ा कि गलती से उसको मालूम नहीं था, उसने पूरी की पूरी एक टेबल डाल दी, उसको मालूम नहीं था कि क्या होता है प्लेगियरिज्म। यू आर कॉट, जो कि टोटली अनइंटेंशनल है, ओके।
सो उसमें टाइम स्पेंड करना जरूरी है आपको अभी. ओके, सो देयर आर मेनी freeware also available through which you can check it. Okay, so Dr. Gaur was one of the best person I have heard. In fact, उन्होंने बाकायदा इसकी सब definition दी हुई है कि क्या एंटी प्लेगरिज्म स्टडीज होनी चाहिए. वो आपके थोड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको करना पड़ेगा. ओके, लेकिन एक बात तय है कि यदि आप सारी चीजें रिसर्च से रिलेटेड, फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, गैदरिंग बैकग्राउंड लिटरेचर, कलेक्टिंग डेटा, manage proper data, analyze data, and without any bias, without any prejudice, यदि आपने उसको इंटरप्रेट किया है, there are chances की बहुत कम होते हैं, बहुत कम chances है कि आप प्लेगरिज्म के उसमें आओगे करके. Okay, these are different definitions you can find in the literature, or I can also share you some this matter. So mostly मेरा वरी रहता है कि जो अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म है उसको हमको कैसे भी करके ट्रेनिंग देके, रिसर्च मेथोडोलॉजी के टूल्स देके उसको अवॉइड करना है. जो इंटेंशनल है उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट की पनिशमेंट के. ओके, बट द वर्स्ट थिंग इज कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. तो हमको उनको वही बोलना है कि आप ये मेथोडोलॉजी यूज कीजिए, ये एसओपी यूज कीजिए, ताकि आपका unintentional plagiarism minimize. हमारे नीति में कई साइंटिस्ट के अगेंस्ट वो हुआ है. फॉर्चुनेटली वी कुड प्रूव कि उन्होंने unintentional था and they were like spared, but everybody cannot be that lucky. Okay, consequences में these are the penalties which now depend on your organization. जैसे UGC की अपनी penalty है, responsibility. They take care. Okay. So हम लोग काफी पढ़ चुके हैं इस बारे में, काफी मतलब डिस्कस कर चुके हैं how to just a minute. Can you hear me? There's some problem with the internet. कोई कंफर्म करेगा कि आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, बीच पहले अब आ रही है, पहले थोड़ा सा नहीं आ रही. Okay, fine. Thank you. So there must do things. आप अपने रिसर्च एरिया में आपको खुद को बनाना पड़ेगा. एक बार आप बना लेंगे कि आप केमिस्ट्री में काम करते हैं, मटेरियल साइंसेस में, तो उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए, वो आपके स्टूडेंट को पास ऑन कर दीजिएगा, तो उसको ट्रेनिंग दे दीजिए कि दिस इज द वे टू डू इट. ओके, क्रिएट रिसर्च नोट्स. मैंने करीब 22 साल पहले पोस्ट डॉक किया था, मेरे पास आज भी उसकी बुकलेट्स हैं. दैट्स द काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई गॉट एंड आई अप्रिशिएट दोस जापानीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ओके, या एक चीज है कि यदि पंक्चुएटिंग कोटेशंस, यदि आप यू नो लाइक पंक्चुएशन सिंगल और डबल यू नो लाइक कोटेशन मार्क्स यदि डालते हैं, तो उसका मतलब है कि आप उसको कोट कर रहे हैं, आप उसको कोट कर रहे हैं, वहां पे रेफरेंस डाल दीजिए. यदि कल के दिन वो गलत निकला तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आपने उस लिटरेचर से सीधा की सीधा लेके यूज कर लिया और उसका रेफरेंस दे दिया है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. और मैं तो बोलता हूँ, हाउ डज इट मैटर? हमको कौन सा उसमें अवार्ड मिलने वाला है कि मैंने खुद लिखा है और मैंने किसी का नाम कोट कर दिया. इट गिव्स अ गुड feeling in fact to the reviewer also कि no, we recognize everybody. So there are anti plagiarism limit अभी बहुत strict हो गया है, जिसे नीरी में और CSR में we follow 10%, but don't get confused with the 10%. Please check it thoroughly कि वो 10% क्या है. पता पड़ा गलती से आपने कोई टेबल ले लिया है, गलती से पूरा की पूरा पैराग्राफ ले लिया है जो कि 1% है, but you can't take that paragraph. You can be caught. Okay. So these are some ways to do that. One is a summarize, paraphrase, quote, and quote liberally. Okay, जिसको भी quote करना है. I think we are not left with much time, and I have to also rush for a meeting. So I'll take another 2-3 minutes. कि आपके यदि R&D project करना है, तो the purpose and criteria should be clear for an institute or organization, for passion or early career researcher हैं आप, या फिर based on your skill. Okay, so are you from a research institute or academic? It matters. Then you have to select the agencies. Okay, कैसे काम करना चाहेंगे? There are current areas which are very important. Environment, blue economy means anything dealing with the sea, water, strategically important, and import substitute. आपने आत्मनिर्भर भारत का नाम सुना होगा.
anything related to import substitute, it will get weightage. Okay, जैसे metals है, chemicals है, materials हैं, sustainability, climate change, resource efficiency, cleaner energy, decentralized renewable energy, livelihood, agriculture. These are country and domain specific. Okay. और नीचे मैंने कुछ फंडिंग एजेंसीज के नाम दिए हुए हैं, DST, MNRE, DBT, MFCC. There are many industries which fund also liberally. Okay, urban local bodies हैं, जो कॉर्पोरेशन है वो भी फंड करते हैं, ऐसा नहीं है. स्पेशली EU जो है, यूरोपियन यूनियन के प्रोग्राम्स बहुत अच्छी फंडिंग देते हैं. तो यदि आप खुद ना करें तो यू शुड बिकम पार्ट ऑफ द कंसोर्शिया. कुछ कॉन्टैक्ट से दिया, इवन हम लोग भी कंसोर्शिया ही रहता है जनरली 5-6-7 इंस्टीट्यूट का. ओके, सो क्लाइमेट चेंज में एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वर्क. इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है. जैसे मैंने लिखा ही यहाँ पे, सब लोग काम कर सकते हैं. एवरीथिंग, द ओनली थिंग यू नीड टू मेक अ गुड टीम. ओके, funding opportunities, in-house R&D funding which is ruled out in colleges. Okay, like हम लोग को रहता था बहुत नीरी में और CSR में. नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी जो मैंने बताई हुई है, SCRB है, DST का, DBT है, MNRE है, many national agencies are there. They are good funders also. There are generic program and there are special calls. Okay, and there are international calls. So you should maintain some balance. जैसे DST का वेबसाइट पे जाएंगे, it's quite user friendly website. इंडो EU प्रोग्राम में मैं आपका एनकरेज करूंगा. और वो सबसे बेस्ट पार्ट है इंडो EU प्रोग्राम का कि वो वर्कशॉप अरेंज करते हैं. एंड समटाइम्स दे कैन इवन फंड यू टू अटेंड दैट वर्कशॉप. पता पड़ा दिल्ली में वर्कशॉप हो रहा है, आप बोलोगे कि मेरे पास फंडिंग नहीं, मैं आना चाहता हूँ वर्कशॉप. अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं. तो उस वर्कशॉप में वो आपको बताएंगे कि ये स्कीम है, ये एरिया है. ओके, और वो वर्कशॉप आपने अटेंड किया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 50 लोग अटेंड कर रहे हैं, जिसमें से 4-5 लोग जो है वो पहचान के आप उनको लिख सकते हैं. I am also interested. So if you are making a team or consortium, please मुझे include कर दीजिए. ये छोटा सा component मैं डालूंगा, ये बड़ा component मैं डालूंगा. So I like that concept. यदि आप attend कर सके तो वहाँ पे ग्रुप बन जाता है तुरंत. Okay. So there are other funding opportunities like consultancy services. महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ बहुत से engineering colleges बहुत consultancy करते हैं. वो कई बार तो नीरी का काम आउटसोर्स कर लेते हैं. हमको कुछ मॉनिटरिंग करनी है चंद्रपुर में, वो कर देंगे हमको वहाँ पे. Okay. There are many industrial projects. Many project of corporate social responsibility. जैसे कुक स्टोर की प्रोजेक्ट है, वहां पे कुछ डेटा कलेक्शन करना है, तो we are also not hesitant. We undertake those kind of work. ऐसा नहीं कि नीरी बहुत हाईटेक रिसर्च में ही करता है, नहीं. उसमें क्या है, सोशली रिलेवेंट प्रोजेक्ट है, इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. वी शुड डू दैट. वर्क कल्चर थोड़ा सा हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली जापान का एग्जांपल दूंगा कि वहां पे उसको ग्रेजुएशन में उस बच्चे को एक वो मिल जाता है, छोटा सा क्यूबिकल मिल जाता है. Okay, or PhD students are like teachers. Master students are like basically research students. They need to do a lot of research. They have a lot of respect also. And professor, oh my God, it's like they call it sensei. तो हमारे भी बढ़ा है उनका status. Okay, so we need to also change. All of us together, you know, like can do that. एक और थोड़ा सा मैंने देखा है कि वहाँ हम लोग लगता है कि बहुत ही सब चीज बहुत बढ़िया रहती है. एक मैं जिस लैब में काम करता था, काफी उसका एक फोटो है, तो अपने को लगता है कि वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या हाईटेक इंस्ट्रूमेंट है. आप इसमें ये देखिएगा कि इतनी सी लैब में उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है. अक्सर नीरी में जो कंप्लेंट आती है हमको कि स्पेस नहीं है, उनको ये पिक्चर दिखाता हूँ. दिस इज हाउ दे मैनेज एंड दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. वहाँ अर्थक्वेक आता है, वहाँ ये आता है, वो आता है, उसमें वो काम करते हैं. मेरे जो कोलैबोरेटर यहाँ आते हैं तो मेरे लैब में गैस सिलेंडर देख के वो बड़ा मुझे वो होते हैं, नाराज होते हैं. डॉक्टर नितिन, हाउ कैन यू अफोर्ड सो मेनी सिलेंडर्स? हमारे एक हीलियम के सिलेंडर में हमारे 4 स्टूडेंट काम करते हैं, 4 इंस्ट्रूमेंट को हम फीड करते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि दे हैव टू मच ऑफ रिसोर्सेज, टू मच ऑफ स्पेस. द बेस्ट पार्ट आई लाइक इज दे सोशलाइज अमंग देमसेल्व्स. दे क्रिएट अ वेरी गुड बॉन्डिंग, क्योंकि हमको साथ में काम करना तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो द टेक होम मैसेज इज यू शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सबको पढ़ना पड़ता है. As now, basically जो रिसर्चर हैं, जो PhD कर रहे हैं, they are like डॉक्टर. हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो डॉक्टर को हम ठीक से नहीं बनाएंगे तो वो कल के दिन पेशेंट देखेगा. सिमिलरली हम रिसर्चर हैं तो वो तो बहुत मुश्किल जाएगा. फिर ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि रीड एज मच एज पॉसिबल एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी read during मास्टर्स डिग्री. लिटरेचर सर्वे और रीडिंग से आपको 50% से ज्यादा फायदा होगा. I know the people at नीरी बहुत सीनियर हैं, वो रोज पढ़ते हैं, रोज 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं.
half of your worries can be over by reading good research papers. Plan your research work carefully. Experimentalist को मैंने बताया हुआ है कि इवन बड़े बड़े लोग से गलतियां होती हैं, इसलिए उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से हमको फॉलो करना चाहिए. ओके, डोंट अवॉइड एनी अनयूजुअल रिजल्ट, ट्राई टू गेट इनटू दैट. Extremely honest with your results, and else you will be basically cheating yourself in the world. Time management and extra hours are key to achieve. I don't think कि मैं तो बहुत बड़ा strong believer हूँ, यदि आपको अच्छी रिसर्च करनी है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. कोई मुझे कितना भी बोले कि you must be inefficient, इसलिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, I just ignore them. Because अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा बहुत अच्छी रिसर्च. ओके, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, बट आई एम अ फर्म बिलीवर कि आप यदि आपको पढ़ना है और यदि आपको सीरियसली काम करना है तो यू नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स सो दैट द स्टूडेंट शुड डू दैट. सो बी ऑलवेज पॉजिटिव and always we can use our common sense to avoid this. Okay, so let's try to contribute our share towards building India a scientific superpower. आप लोगों की और काफी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मैं बोलूंगा. I'll stop here. Thank you very much for your patience, and we can have a few quick comments before I need to push off. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a nice lecture. I hope, including me, all our audience also get benefited by your lecture. I would like to ask from Mr. Anju Dadoria, Organizing Secretary, for starting the question answer session. Anju? Yes, ma'am. Just ask, you can ask the questions. वो सारे questions जो chat box में हमारी audience के द्वारा पूछे गए हैं, research scholars के द्वारा पूछे गए हैं, please आप बताएं. के बाद एक बोले. Hello, sir. There are few questions which our audience have put forward, and the first question is, in which journal we can publish our research article easily? Very important, but I can tell you कि आपको जो लास्ट का वर्ड है that's worrisome. In which journal we can publish our article easily? Okay, easily के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. There are journal जो कि पेड जर्नल है, वहां पे उनकी मेंबरशिप पे कर दीजिए, वो कुछ नहीं देखेंगे, पब्लिश कर देंगे. There are journals, okay, तो वो सब एक यूजीसी का आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ जर्नल्स है. ओके, स्प्रीज जर्नल्स जो है वहां पे आप गलती से भी मत पब्लिश कीजिए. ऑलवेज गो फॉर अ गुड रेप्यूटेड जर्नल जो कि अच्छे पब्लिशर के हैं. ओके, नेक्स्ट. यस सर. यूजीसी केयर में जनरल लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है सर? सॉरी, मतलब हर 6 मंथ में लिस्ट चेंज हो जाती है सर, रिवाइज हो जाती है? हाँ, वो क्राइटेरिया ऐसा है कि देखिए थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स आर देयर, बहुत सारे जर्नल्स हैं. किसी जर्नल का कुछ इश्यू हुआ है, ओके, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके सब्जेक्ट के टॉप रेटेड जर्नल्स हैं वो कभी भी उस लिस्ट में नहीं आएंगे. ओके, वो हमेशा मतलब रेप्यूटेड जर्नल की लिस्ट में ही रहेंगे. और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में काम करते हैं उसमें आपको कम से कम 200 जर्नल ऐसे मिल जाएंगे कि जो रेप्यूटेड जर्नल है, जिनका कभी कुछ नहीं खराब होगा. टारगेट दोज जर्नल्स. डोंट बॉदर अबाउट कि इस लिस्ट में से पहले 10,000 थे, फिर वो 8,000 हो गए या 12,000 हो गए करके. देयर विल बी जर्नल्स. ओके, Okay, sir. Why H index is important and how it is calculated? Well, there are two things, H index and I-10 index. Okay, so I-10 index is basically आपका कोई पेपर है जिसको अभी क्या हो गया है कि नंबर ऑफ पेपर्स जो है आपकी 3 चीजें हैं. आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं वो नंबर ऑफ पेपर्स हो गए. फिर एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है जर्नल का. इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब है कि उस जर्नल के पेपर कितने लोग साइट करते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ते जाता है. अब I-10 का मतलब होता है कि आपने 100 पेपर पब्लिश किए हैं, उसमें से कितने जर्नल जो हैं वो कितने पेपर जो हैं उसको कम से कम 10 बार साइट किया गया है. ओके, और H इंडेक्स का मतलब होता है जितनी आपकी वैल्यू है उस पेपर को उतने बार कम से कम साइट किया गया. सो इट इज ऑल द कीवर्ड इज साइटेशन. ओके, साइटेशन मतलब आपने एक पेपर पब्लिश कर दिया और किसी ने पढ़ा नहीं है और किसी ने साइट नहीं किया है, तो ये माना जाता है कि उस पेपर का यूज ज्यादा नहीं हो पाया है.
उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट, Which is better, Scopus or SCI index? it's more or less the same thing. Scopus also gives everything. Web of Science also gives you the same thing. Okay, sir. What is peer review journal, sir? Peer reviewed journalist की अभी तो सारे जर्नल में peer reviewed journal ही बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जर्नल में जो आपका एक इवैल्यूएशन प्रोसीजर रहता है, जर्नल को आपका जो पेपर पब्लिश करोगे आप तो उसको रिव्यू किया जाएगा, ओके, एंड peers we know if the paper is going through the peers, okay, and a critical or a kind of a systematic evaluation procedure, those are what peer reviewed journals. जैसे पहला क्वेश्चन था ना कि सबको हम इसमें क्विकली कर देंगे, तो देयर आर जर्नल्स व्हिच आर नॉट इवन peer reviewed journals, although they may be claiming. Okay, sir. Which plagiarism tool is better? And normally we check plagiarism online. Unfortunately, I'm not very much aware because हम लोग authenticate का हमारे पास में वो license agreement है, थोड़े से वो रहते हैं, but I think I have shown couple of sort of link जहाँ पे आप करते हो, या कभी-कभी आप जर्नल की भी हेल्प ले सकते हो। जब आप उसमें डालेंगे तो आप लिख सकते हो कि we don't have access to this, so kindly help us in plagiarism check करके। So authenticate I found is very good. Okay, sir. The next question is, sir, how can we avoid the risk of publishing in a fake journal, and how can we evaluate a journal's quality? Yeah, one is you should go through the UGC list, जिसमें आपको जितने बैड जर्नल्स हैं उनकी लिस्ट रहेगी, तो उसको सीधे से अवॉइड कर लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा उसके बाद में पब्लिशर प्लस even the impact factor sometimes help, okay. The publisher is a reputed publisher and the impact factor, okay, and you can also see the editorial board and those aspects which will tell you, or you can contact somebody who is senior in your area and ask. Okay, sir. The next question is bibliography का standard pattern क्या होना चाहिए, sir? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं सर तो अल्फाबेटिकली बोलते हैं कि अल्फाबेटिकली आप इसको I agree. In fact, I can agree that for different journals, for PhD thesis, there are different bibliographic pattern. Okay, so it's a choice of the journal and the agencies. In fact, I fully agree. Sometimes we also feel कि इस particular option करना चाहिए, but अभी जो tool आए हैं, okay, EndNote and all that, उनके through आप उसको एक लेते हैं और मेरे ख्याल से sooner there will be an agreement कि हम common वो journal करें, so that कि उसमें identify करने में आसानी जाती है। Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you very much. Yes. Now, thank you, Anju. Now I humbly invite Dr. Archana Singh ma'am, convener of the webinar, for vote of thanks. थैंक यू सुप्रिया। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज की वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर नितिन लबशेतवर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने अत्यंत बिजी शेड्यूल के बावजूद इस वेबिनार के लिए इनविटेशन स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय दिया। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही सरल तरीके से समझाया और बहुत सारी क्वेरीज जो थी उनका अच्छे से आंसर दिया। तो आई थिंक सारे प्रतिभागी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। मैं इस वेबिनार हेतु मार्गदर्शन व सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपने प्रबंध समिति एवं प्राचार्य महोदय की बहुत आभारी हूँ। मैं सभी प्रतिभागियों की विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस वेबिनार में भाग लेकर इसे सफल बनाया। मैं टेक्निकल टीम के विशेष सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी को इस वेबिनार के सफल आयोजन पर धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, ma'am. It was my pleasure. So I'll take leave. Thanks. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर।